Shall we start now, sir? Dr. Deepak Kumar, today's chair person. Good morning. Namaste. Deepak sir, shall we start now? I think only 3 or 2 participants have been joined right now. Yes, ma'am. Please Okay. start. Okay. Okay. A very good morning to all of you. So today is the second day of national seminar on current trends in research for developing New India. That is organized by Magadh University, Bodhgaya, Bihar. So before starting the online paper presentation of our participants, I, Dr. Vinita Kumari, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Magadh University, would like to do a hearty welcome to all of you. Today's chairperson, Dr. Deepak Kumar Srivastav, and co-chair, Dr. Anand Kumar Tripathi, and all the participants who are going to present today. And today there are 13 participants who will present their papers. And right now only 2 participants have joined the session. So I will introduce the chairperson and co-chairperson before beginning of every sessions. Actually, 3 sessions are going to be held today. That is on this second day of the seminar. So I will introduce the chairperson and the co-chairperson before the each sessions. So okay. So we are going to start now. And before starting, I would like to give a brief introduction about the person who are going to chair our session, this first session of second day, and co-chair of this session. So this session is going to be chaired by Dr. Deepak Kumar Srivastav sir, who is an assistant professor in the Department of History, Shri Shankar College, Sasaram, under Veer Kumar Singh University, Ara. Dr. Deepak Kumar Srivastav has many research works published in renowned journals, and the session is going to be co-chaired by Dr. Anand Kumar Tripathi, working as an assistant professor of history in Rohtas Mahila College, Sasaram. Anand sir takes classes of history under Mukhyamantri Yojana Uttar Pradesh in Varanasi Mandal for IAS, PCS competitive examination. And so you have worked with many universities and institutions. Dr. Anand Kumar Tripathi has a number of papers published in many renowned journals. So, sir, now it's over to Dr. Deepak Kumar Srivastav, sir, the chairperson of the session, to continue the session. Sir, over to you, sir. Deepak, sir. Sir, do yourself unmute, sir. How many research paper reading in this session, ma'am? Okay, there are 13
papers. presentation will be there. Yeah, there are 13 Uh, papers. Yeah. and how many join? Sir, as I'm saying that only 3 participants have been joined right now. Yeah. Then you start, ma'am. It may be later they will join. Okay, So shall I you call their names or you will do that? hello. Shall I call their names or you will conduct? No, ma'am. You call their name. Okay, okay. And Okay, fine. So as I'm saying that Dr. Avinash Kumar is the first participant. Is he available here? No, I don't think he has joined. Okay, Vivek Kumar. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Yes. Good morning, ma'am. मैं Okay, बहुत जन okay. विभाग Now का it's प्रधान। your. यस यस। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग दीपक सर एंड गुड मॉर्निंग आनंद कुमार त्रिपाठी सर। आई एम ए हेलो। हाँ हाँ ठीक है। आई एम ए Yes, you are audible, रिसर्च। sir. यस यस। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज इस सेमिनार में हमारे शोध का विषय है भारतीय संस्कृति के महान योगी श्री श्री परमहंस योगानंद जी के विषय में मैं बताना चाहूंगा। श्री श्री परमहंस योगानंद जी 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। वसुधैव कुटुंब को आदर्श मानने वाले भारतीय संस्कृति प्राचीन से ही संपूर्ण विश्व को प्रेरित करती रही है। पूर्व से ही अनेकानेक ऋषि तुल्य मनीषियों ने भारतीय संस्कृति के सनातन विचारधारा को पाश्चात्य देशों में प्रसारित करते हुए वहां के जनमानस का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया है। इन मनीषियों में परमहंस योगानंद जी का नाम बहुत ही अग्रणी है। श्री परमहंस योगानंद जी पहले मनीषी हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति की धरोहर योग विद्या को सर्वप्रथम यूरोप एवं विशेषकर अमेरिका में प्रसारित करने का गौरव प्राप्त है। इनकी रचनाओं में सुप्रसिद्ध रचना योगी कथामृत ऑटोग्राफी ऑफ योगी है, जिसमें इन्होंने अलौकिक दिव्य पुरुषों के अनुभवों व चमत्कारों के साथ साथ अपने जीवन यात्रा को सरल एवं ग्राह्य शब्दों में व्यक्त किया है। यह रचना सामान्य जन को सहज ही परमात्मा की ओर प्रेरित करती है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। इनके माता पिता महान क्रिया योगी संत लाहड़ी महाशय के शिष्य थे। बचपन से ही वह मां के सानिध्य से धर्म ग्रंथों के साथ उनका लगाव रहा। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर मां रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां इन्हें सुनाती थी। सुधकड़ी स्वभाव के धनी परमहंस जी का योगी जी ने सन 1910 में लाहड़ी महाशय के शिष्य त्रिकालदर्शी संत स्वामी योगेश्वर गिरी से हुई, जहां से इनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। गुरु जी ने इन्हें अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बताया कि परमात्मा ने तुम्हें विशेष कार्य संपादित करने हेतु पृथ्वी पर भेजा है। शने शने गुरु से योग और ध्यान की शिक्षा व दीक्षा ग्रहण कर वह 1917 में दिहिका पश्चिम बंगाल में 7 विद्यार्थियों के साथ श्री श्री योगा जी ने एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष पश्चात 1918 में इसे स्थानांतरित करते हुए योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय का नाम दिया गया। रांची में इसकी स्थापना की गई। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग और ध्यान की भी शिक्षा इन्हें दी जाती थी। इस प्रकार अपने गुरु श्री योगेश्वर गिरी जी से क्रिया योग की सफल दीक्षा प्राप्त कर योगानंद जी ने इस योग विधि को सामान्य जन के लिए उपलब्ध कराया। श्री परमहंस योगानंद जी ने भारत के उन प्राचीन ऋषियों एवं संतों में आदर्श प्रतिनिधि रहे जो भारत का
एक वैभव है। बोस्टन में धार्मिक बोस्टन में उन्होंने बोस्टन में धार्मिक अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम से एक संस्था स्थापित की। संस्था के अध्यापन के साथ साथ वे वहां घूमकर व्याख्यान देते हुए अमेरिका और यूरोप में क्रियाशील का प्रचार प्रसार जीवन पर्यंत करते रहे। वे बचपन से ही अलौकिक और महान विभूतियों से मिलने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें उत्साहित करते रहते थे। गंध बाबा, बाबा स्वामी, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, विनीत चंद्र राम गोपाल बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर, संत टेरेसा नाइसन, महात्मा गांधी, आनंदमयी माँ, निराहारी योगिनी गोरी बाला आदि अनेक विभूतियों से इनका मिलना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना और उनसे आशीर्वाद की कामना योगानंद जी की स्वाभाविक विशिष्टता रही थी। इस प्रकार अनेकानेक महान विभूतियों की संगत और गुरु कृपा से परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में योग को सर्वमान के लिए सुलभ कर दिया। सन 1916 में परमहंस योगानंद जी ने ब्रह्मांड में व्याप्त महाप्राण की शक्ति से शरीर में शक्ति संचार करने के नियमों का आविष्कार किया। तब उन्होंने योगदा शब्द को गढ़ा। आज अमेरिका में योग और ध्यान एक आम शब्द की भांति प्रयोग होता है, जिसका संपूर्ण श्रेय परमहंस योगानंद जी को जाता है। योग का उपदेश प्राच्य देशों में प्राय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार के रूप में होता था, परंतु परमहंस जी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक व्यक्तियों को मोक्ष तक पहुंचाना है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में अपने महात्माओं व योगियों द्वारा किए गए चमत्कारों का विशुद्ध रूप से वर्णन किया और यह बताने का प्रयास किया कि सिद्ध योगियों व तपस्वियों में ईश्वरीय सत्ता का वास होता है, इसीलिए वे कुछ भी करने में समर्थ होते थे। परमहंस जी ने इस मायात्मक सृष्टि व विज्ञान की सीमा की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बन सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है। उनकी मूल रचना माया है, स्वयं प्रकृति माया है। प्रकृति विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अंततः वह 1920 से 1952 तक जीवन मुक्त परमहंस जी ने दीर्घ समयावधि तक अमेरिका में लोक संग्रह करते हुए 7 मार्च 1952 की शाम लॉस एंजलिस में महासमाधि ली। अब हम सर इसके निष्कर्ष पर आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परमहंस योगानंद जी ने मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन ईश्वरीय परम सत्ता की प्राप्ति को प्रतिपादित किया है। उन्होंने विश्व को यह संदेश दिया है कि क्रिया योग के माध्यम से यह सर्वथा संभव है कि महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्त निरोध कहकर योग को परिभाषित किया है और यह स्पष्ट किया है कि चित्त की वृत्तियों की निरुद्धावस्था में अर्थात समाधि की में साधक की अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने इस आत्म साक्षात्कार को ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भारतीय अवधारणा को अपने क्रिया योग के माध्यम से साकार करने का सार्थक प्रयास किया। इस क्रम में योग के साथ साथ ईसाई धर्म एवं हिंदू धर्म में वर्णित विचारों
को उन्होंने प्रतिपादित करते हुए पूर्व और पश्चिम के देशों में एक स्थान पर लाने का अतुलनीय कार्य संपादित किया। ऐसे महामानव जी को उनके कार्यों के लिए भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में सदा याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद सर, हमारा आज का शीर्षक संपन्न हुआ। धन्यवाद विवेक जी। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक कुमार जी, इतनी जी विस्तृत और कार्यक्रम के शुरुआत में ही इतनी विस्तृत और इतने मतलब अच्छे व्यक्तित्व का इतना विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया श्री श्री जी, परम धन्यवाद के विनीता बारे में। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आनंद सर, त्रिपाठी सर, धन्यवाद। और मैं अंत में दीपक सर को जी और हमारे जो चेयर पर्सन है उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और सेमिनार को बहुत अच्छी तरह से प्रसारित करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा ही मगध विश्वविद्यालय में किया जाता रहे, इससे हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और रिसर्च के प्रति, रिसर्च के विद्यार्थियों को एक लालसा उमड़ेगी कि वो भी रिसर्च के क्षेत्र में कुछ करें, कुछ विषय पर शोध करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, सभी सहपाठियों को, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक कुमार जी। सर, डॉक्टर दीपक कुमार सर और डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी सर और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है विवेक कुमार जी से तो प्लीज सर, यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज पेपर। मैम, पहले रिसर्च स्कॉलर अगर हूँ, पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे विवेक जी से। Okay, sure, sir. Okay. So anybody who wants to ask a question? विवेक जी, You can ask, sir. विवेक जी सुन रहे हैं? I think he has हाँ। left. जी Okay. जी, सुन रहा हूँ। विवेक जी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जी जी आपने पढ़ा है उसको? हाँ सर, मैंने उसको उतना तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अच्छा। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा है और शोध के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ, पूरी अच्छा जानकारी अच्छा तो नहीं है सर। अच्छा, एक बार उसको जब समय मिले, फुर्सत मिले, क्योंकि शोध के दौरान आदमी व्यस्त रहता है, हाँ एक बार जी उसको जी जी सर। पढ़िएगा तो जो योगानंद के प्रति आपकी अभिव्यक्ति थोड़ी बहुत अगर अस्पष्ट है अगर, तो वो पूरी जी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, और बिल्कुल। और दूसरी बात कि सिर्फ एक ही सोर्सेस से नहीं, अगर योगानंद के बारे में कुछ और मिलता है तो जी उन सोर्सेस से भी, या कभी कभार उनके आश्रम रांची जाना होता होगा आपका, तो कभी कभार घूमते फिरते उनके आश्रम हाँ चले जाइएगा, हाँ क्योंकि हम लोग हिस्ट्री वाले हैं और बुद्धिस्ट स्टडीज भी हमको जी लगता है कि हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो हाँ हम, बिल्कुल, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जी जी सब एक है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ जी हम उसमें एक कोरोबरेटिव एनालिसिस करते हैं, जी मतलब जी संगत विश्लेषण करते हैं और कई स्रोतों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। जी तो सर, ये जी हम, ये आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक होगा कि आप जो प्राइमरी काम उनका होगा वो वहां पे अभी भी है। खैर, उन्होंने जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ जी योगी लिखा, वो तो उनका जी, प्राइमरी काम, खुद का वो काम है। प्राइमरी काम है, जी 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 सर। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम कार्य हैं उनके, उनको देखिएगा तो और भी चीजें बहुत सारी स्पष्ट हो जाएंगी। जी एक जी बात, आप दूसरी बात, जी जी बिल्कुल, मेरा मेरा रांची जाना होगा सर, तो मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन वहां बिताऊं, एकदम एकदम जो एकदम। कुछ हमको वहां और सीखने के लिए आश्रम में। जी सर, और जी दूसरी बात जो आपने कही, वो जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का सार वही है कि जी योगी जी कहते, परमहंस जी कहते हैं कि, जी जी सॉरी, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, परमहंस जी तो जी फिर जी रामकृष्ण परमहंस से लोग जोड़ने जी लगेंगे। जी जी हाँ योगानंद जी कहते हैं कि साइंस के बियॉन्ड भी पावर है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जितना आर्गुमेंट्स है वो ये दिखाने का जी प्रयास करता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ जी योगी में, उसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने भी। तो जी जी उसमें वो जी कहते हैं कि ये चमत्कार जो है ना,
ये पारलौकिक शक्ति से आती है और उसी को हमें गेन करना है। जी वो जी उसका साधन एक योगा हो सकता है, लेकिन साधन हो सकता है। साधन हो सकता है। और जी उस जी पारलौकिक शक्ति को यदि हम अटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जी तो हम कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। और साइंस की अपनी एक सीमा है, जो आपने कही कि वो कहते हैं कि हाँ विज्ञान की हाँ अपनी जी एक सीमा है। हाँ तो जी विज्ञान उस चश्मे को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी सीमा वहीं अवरुद्ध हो जाती है। और जी इसी कारण से वो चमत्कार को या तो मिथ्स बता देता है, या फिर वो ये कहता है कि ऐसा साइंस में संभव नहीं है। तो नहीं मेन उस किताब का आर्गुमेंट भी लगभग जो आपने बातें कही उसी जी के आसपास है। लेकिन जी पूरी तरह से स्पष्टता के लिए एक बार मैं कहूंगा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को जी पढ़िएगा। जी जी ठीक है। जी बहुत आपके सजेशन, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी सर, बहुत अच्छा। विनीता मैम, आनंद सर, आनंद सर सुन जी रहे हैं? जी 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 सर, सुन रहा हाँ, हूँ। अगर अगर कोई हाँ रिमार्क्स जी, देना है नमस्ते तो। नमस्ते आनंद सर। जी 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 नमस्ते, नमस्ते सर। जी सबसे जी पहले ये participant हैं और ये आयोजक मंडल हैं, सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम। और विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी और पर्चा पढ़ा है। दो जी तीन बातें जो मैं यहाँ पे कहूंगा जी उसको अन्यथा ना लेंगे, और मैं एक जी जी सुझाव के तहत आपको कहूंगा। जी जैसे वर्तमान में आपका जो ये सेमिनार हो, हाँ जी जी सर। सबसे पहली बात ये कि आपने योगानंद जी का जो मुख्य काम है कि जी योग कैसे मानव के कल्याण में या फिर इस जगत के एक नवीन सृजन में, नव सृजन में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकता है। अभी जैसे तो दीपक कुमार सर ने आपको जो सजेशन एकदम ध्यातव्य और गौरतलब हैं। उसके अलावा मैं जो बात कहूंगा वो ये कि आपका ये जो टॉपिक है सेमिनार का, वो जी कैसे जो न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च है वो डेवलपमेंट में, हाँ विकास में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकता है। तो भारत जो है, भारत के पास अभी शक्तियां क्या हैं, भारत को जी किस जी रूप में जाना जाता रहा है, हम्म, इंडिया सॉफ्ट पावर को लेके आया है। ये सब सॉफ्ट पावर क्या है? मोरल वैल्यूज है, इथिकल वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक आइडियाज है, ये जो योग की परंपरा है। तो ये योग विज्ञान में कैसे अपनी भूमिका निर्वहन करके, खासतौर से चिकित्सा विज्ञान में मानसिक जी स्वास्थ्य को ठीक करने में कैसे अपनी भूमिका निभा क्या बोलूं? उद्धृत करें। जैसे परमहंस योगानंद जी का काम तो बड़ा मतलब विलक्षण काम है। तो मेरा ये जी कहना है जी कि जैसे आप अपने शोध में उनके जीवन वृत्त पे जितना ध्यान दें, उससे ज्यादा ध्यान आप ये दें कि उनके द्वारा जो योग क्रियाएं बताई गई, वो योग क्रियाएं जी किस जी जी तरीके से मानव जाति के कल्याण में अपनी भूमिका निभा। क्योंकि आजकल आप देखें, भारत के योग को पूरा विश्व अपना रहा है, हाँ और जी न जी सिर्फ अपना बिल्कुल रहा सर, बल्कि लाभ भी प्राप्त कर रहा है। तो लाभ भी ऐसे हो। में उनके द्वारा जो भी योग क्रिया, क्योंकि वो भारत के योग के मामले में सबसे पहली पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, जो जी योग को प्रचारित कर रहे हैं, योग को नवसृजित कर रहे हैं। जी तो जी ऐसे में उनके इस यौगिक क्रियाओं को, खासतौर से जैसे विज्ञान भी जो हो रहा है, योग को अगर हम विज्ञान के रूप में देखें, तो विज्ञान अगर मानवता के कल्याण में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, तो वो विज्ञान निष्प्राण है। जैसे गांधी जी ने भी 7 पापों की संकल्पना प्रस्तुत की थी, उसमें उन्होंने कहा था मानवता बिना विज्ञान भी जो है वो एक पाप की तरह से है। जी जैसे जी जी काम के बिना किसी को धन देते हैं, वो एक पाप है। जी विश्वास के बिना कोई धर्म है तो वो भी एक पाप है। और बिल्कुल। चरित्र के बिना ज्ञान है, वो भी एक पाप है। ऐसे ही हाँ जी मानवता के बिना विज्ञान है तो वो भी एक पाप है। जी तो जी ये विज्ञान रूपी जो योग है, वो मानवता के कल्याण में अपनी भूमिका कैसे निर्वहन कर रहा है, इस बात जी को आप थोड़ा ज्यादा अपने शोध में, और खास हाँ तौर से उन बिल्कुल। यौगिक क्रियाओं को। बिल्कुल सर। विनीता मैम, यस सर। हाँ कंटिन्यू। बहरहाल, ये बहुत ही क्या हो इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव सकती हैं आप इंटरेक्शन लोग रहा। अभी इसे प्रेजेंट करें तो बेहतर हो कि इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे
इस बात कोई के लिए क्षमा को, कीजिएगा, लेकिन कोई बेहतर हो को, कि एक बार पार्टिसिपेंट्स अपने पेपर्स वगैरह प्रेजेंट कर लें, फिर हम लोग उस पे बारी बारी से लास्टली नोट कर कंक्लूड देंगे, कर ताकि देंगे। सबका हो भी हाँ जाए। हाँ, जी 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 ठीक ठीक जी। ठीक है। ओके ओके। Moving to next, I would like to call Jayanti Kumari, research scholar, Magadh University. Is she available here? No. So to the next, Nancy Kumari, research scholar, JD Women's College, Patna. Nancy Kumari. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning. So you will start your presentation, Nancy. Yes, ma'am. Okay. Hello. Yeah, you start. Good morning, sir, and good morning, ma'am. My name is Nancy Kumari, research scholar from Patliputra University, Department of Home Science. My guide name is Dr. Nidhi Sinha. My research paper on assessing the awareness of students on the National Education Policy 2020 in Bihar. The National Education Policy NEP 2020 has presented itself as the advanced version over the previous policies on education. In the year 2015, a team was formed under Cabinet Secretary T.S.R. Subramaniam, who in turn executed the process for the policy making and its execution. Based on the reports received in the year ahead, the working policy was prepared and submitted for further review and recommendation by a team marshaled by former Indian Space ISRO Organization ISRO Chief Krishna Swami Kasturi Rangan. My research objective of the study, assess the level of awareness among undergraduate and postgraduate students regarding the NEP 2020. And second objective is to identify the key factors influencing the awareness of NEP 2020 among students. My research methodology is the primary data was collected using an interview schedule, which was sent via Google Form to undergraduate and postgraduate student in the Patna district. The number of respondent that is sample for the study was 100 learners pursuing their undergraduate or postgraduate courses. Purposive sampling was used for getting data from respondents. The investigator prepared the National Education Policy Awareness Tool. The investigator selected multiple choice type questionnaire as a tool for collecting data in present study. The device included 15 items related to National Education Policy awareness. The validity and reliability of the devices were checked and corrected by the expert. The data related to the demographic was collected to find the distribution of sample across and course pursued, included male, female, undergraduate, postgraduate student. My finding is the awareness of NEP education policy 2019 is not above average. There is no significant differences among students on awareness on national education policy based on gender. Although male students have more awareness than female students. Urban students have more awareness than rural students. T-value indicates that the students' awareness of the new education policy 2020 is not affected by their location. There is a significant differences among students on awareness on national education policy based on age. Students of 18 to 21 years have more awareness than the students of 22 to 25 years. There is a significant differences among traditional education system student and professional education system students on awareness on new education policy. My conclusion is generally average undergraduate student have low level of awareness and the average postgraduate student have moderate level of awareness towards National Education Policy 2029. The awareness program must be organized by the government at least for teachers and students. Generally, female do not have sufficient intention to know about recent development, but it is not correct
Students of higher age group were least interested to know about the recent update due to erratic behavior. Students of rural locations have no way to interact with other people, so they have low awareness. The government must arrange awareness program to make aware of the National Education Policy 2029 seriously. 2020 seriously. मैम नेक्स्ट, विनीता मैम नेक्स्ट। Okay, yeah. Thank you, So ma'am. the next one is Amit Kumar Pandey, research scholar, Nilambar Pitambar University, Palamu. अमित कुमार पांडे। जी मैम नमस्कार। आपका टॉपिक है शिक्षा का ऐतिहासिक विकास। जी मैम जी नमस्कार सर। प्लीज यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। जी मैम, मेरा नाम अमित कुमार पांडे, रिसर्च स्कॉलर, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर, पलामू। मेरा रिसर्च का टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि, जिसमें हमने शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पे सेमिनार में भाग लिया है। किसी भी देश के विकास में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें मनुष्य को विकास का आधार शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती हैं। इन जन्मजात शक्तियों के प्रस्फुटन से ही व्यक्ति का विकास होता है और इन जन्मजात शक्तियों का प्रस्फुटन शिक्षा के द्वारा ही होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। रोबेल ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां प्रकट होती है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उसके ज्ञान, बोध और कौशल का विकास कर सभ्य एवं संस्कारित नागरिक बनाकर देश का उपयोगी नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मैकेंजी ने कहा था कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव में संबंधित होती है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको प्रभावी बनाकर देश की सतत विकास किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य प्रारंभ में जानवरों के शिकार, कंदमूल, कृषि को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। आग के आविष्कार के बाद इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। अब ये भोजन पकाकर खाने लगे। धीरे धीरे इनका बौद्धिक विकास हुआ। समान एवं चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। उसके बाद लिपि का आविष्कार हुआ तथा शिक्षा की नींव प्रारंभ हुई। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि शिक्षा का प्रारंभ वैदिक कालीन संस्कृति से शुरू हुआ। भारत में शिक्षा का विकास विभिन्न कालों में हुआ। इसमें भारतीय शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन भारतीय शिक्षा को वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा के रूप में विभाजित करते हैं। इसके बाद की शिक्षा को ब्रिटिश कालीन शिक्षा कहा जाता है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समय समय पे कई समितियों और आयोग का गठन किया गया। भारत में प्राचीन शिक्षा की शुरुआत ऋग्वेद की रचना काल से मानी जाती है। इस समय अशिक्षित व्यक्ति को पशु के समान कहा गया है। विद्या विहीन पशु। शिक्षा को ज्ञान और मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। ज्ञानं तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप आदर्शवादी था। इसमें गुरु शिष्यों को धार्मिक शिक्षा, ईश्वर की भक्ति, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, संस्कृति, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अभिवृत्ति विकसित करने पर जोर देते थे। वैदिक काल में जब कोई व्यक्ति विद्या और ज्ञान से संपन्न हो जाता था तब उसे ऋषि ऋण से मुक्त माना जाता था। विद्या से मनुष्य का लौकिक एवं पारलौकिक विकास होता था तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। उस समय कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। आगे चलकर वेद में लिखा गया शब्द प्रमाण बन गए और शब्द जीवन का आदर्श बन गए। इस समय ब्रह्म को सत्य और संसार को मिथ्या मानकर जीवन का आदर्श बन गया। लोगों की जीवन शैली में आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली अपने समय में राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन से जुड़ने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे हावी होने लगी। शिक्षा में कर्मकांड बढ़ने लगा। यज्ञ, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहितवाद का उदय हुआ,
जिससे शिक्षा में ब्राह्मण का एक अधिकार हो गया। शिक्षा को कर्म कांड से जोड़ दिया गया। इसके कारण समाज में निम्न जातियों और नारी जातियों की स्थिति दयनीय हो गई। समाज में साधारण लोग परेशान रहने लगे। ऐसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप 530 ईस्वी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों की स्थापना की गई, जहां बाद में सभी छात्रों को इन बौद्ध मठों और बिहार में शिक्षा प्रदान की जाने लगी। बुद्ध के समय शिक्षा और विद्या का केंद्र बिंदु बौद्ध संघाराम था। बौद्ध शिक्षा में बालक को ऐसी आचरण सिखाया जाता था जिसमें उनका मन इधर उधर न भटके और मस्तिष्क की स्थिरता बनी रहे। बौद्ध शिक्षा में भगवान बुद्ध अज्ञान को इस संसार के समस्त दुखों का कारण मानते थे और इससे छुटकारा शिक्षा के सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर ही मिलने की बात कहते थे। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करने का साधन जानना था। जब किसी व्यक्ति की सारी इच्छा समाप्त हो जाती थी, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती थी। बौद्ध धर्म में व्यक्ति का आचरण पे विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षा देने के लिए कुमार ब्राह्मण का पांडे, होना आवश्यक नहीं। अमित कुमार जी, जी जी मैम। आपको सिर्फ 4 मिनट्स मिले हैं, तो जी कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जी। ओके। उसके बाद समय काल और परिस्थिति में परिवर्तन आने लगा। शिक्षा पहले आध्यात्मिक और परलौकिक ज्ञान केंद्रित था, धीरे धीरे भौतिकवादी होने लगा। और उसके बाद मुस्लिम शिक्षा का विकास हुआ, आक्रमण है, जिसमें बौद्ध मंदिरों को और मठों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। और शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली नाम से नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें मुगल शिक्षा में की रुचि के कारण इस काल में शिक्षा का विकास ठीक हुआ। बाबर के साथ बहुत सारे मुगल कालीन शासक आए जिन्हें शिक्षा पे भी ध्यान दिया। मुगल काल की शिक्षा के बाद भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज भारत जो शिक्षा के साथ धर्म का भी प्रचार किए। पादरी संत जेवियर ने सबसे पहले भारत में शिक्षा की व्यवस्था की। उसके बाद भारत में विभिन्न समाज के लोगों ने शिक्षा पे काम किया, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन कारण राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। गोखले ने 1910 ईस्वी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा एवं सुधार की सिफारिश की। दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद आदि ने शिक्षा में अनेक कार्य किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना में सुधार कार्य किए। उसके बाद भारत में विभिन्न संगठन ने कार्य किया, जिसमें 1882 में हंटर कमीशन ने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विकास के लिए कार्य किए, सिफारिश किए। 1817 में सेटलर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया। 1927 में हटांग समिति, 1937 में वर्धा शिक्षा योजना ने गांधी जी ने कार्य किया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा का काम किया गया। 1952-53 में मुदालियार आयोग का गठन कर माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया। इस तरह से 1964-66 में कोठारी आयोग के कार्य हुआ। के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 में भारत के सभी लोगों को शिक्षा के लिए कार्य किया गया। इस प्रकार भारत की शिक्षा ऐतिहासिक विकास धीरे धीरे होता रहा। इस प्रकार बौद्ध काल, मुगल काल, वैदिक काल और आजादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास और सुधार होते रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अमित जी, जी सर। जब भी शोध पेपर लिखते हैं ना, जी जी सर। इतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन नहीं रखते हैं। जैसे अगर आपने शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्रम समझाने की कोशिश की, तो जी सर। उसको प्राचीन इतिहास का फ्रेम दे देते या मध्यकालीन इतिहास का फ्रेम दे देते, मध्यकालीन भारत में ऐसे करके, या फिर कोई एक सेगमेंट पकड़ लेते। जी ठीक जी। है, जैसे प्रौद्योगिकी का विकास या फिर मेडिकल साइंस का विकास। तो थोड़ा रिसर्च पेपर ये लगता है कि टाइम फ्रेम छोटा है और उसमें आप कुछ सर्च करके कुछ कंक्लूड कर पाते हैं। इसमें तो जी सिर्फ जी। आयोग गिना देंगे और फिर सुपरफिशियल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें डेप्थ नहीं रह पाएगी रिसर्च पर। ये जी जी। एक ऐसे हो जाएगा, लेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो आगे से जी प्रयास जी सर। करिएगा कि एक छोटा टाइम फ्रेम रखिए या कोई छोटा क्षेत्र रख लीजिए। जैसे जी टीचिंग जी। मेथड पे अगर काम कर रहे हैं तो टीचिंग मेथड रख लीजिए।
कि प्राचीन काल में टीचिंग मेथड या प्राचीन काल में शिक्षण संस्थाएं रख लीजिए, मध्यकालीन काल में शिक्षण संस्थाएं, मतलब कोई एक सेगमेंट रिसर्च है ना। जी जी जी। ठीक है, सर पहली बार तो ये करना है। हाँ, कोई बात नहीं, देखिए ऐसे ही सीखता है, हम लोग भी शुरुआत में ऐसे ही करते थे। तो जी। ये ट्रेनिंग की शुरुआत है, इनिशिएशन है, और आप बेहतर करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, ठीक है जी अमित सर, जी। आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को हम अमल करेंगे और हाँ नेक्स्ट हाँ बार हाँ, सुधार का प्रयास ओके करेंगे। ओके ओके, बाय। मैम, नैन्सी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब धर्मेंद्र चौधरी है, रिसर्च स्कॉलर MU बोध गया। धर्मेंद्र चौधरी, I think he is not available. So next, सर मैं नेक्स्ट बुलाऊं या वेट करूं धर्मेंद्र जी का? नहीं, नेक्स्ट 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 ना, नेक्स्ट। ओके ओके। नाउ फैजा फरहद मोहम्मद मुस्तफा, आर यू अवेलेबल हियर? फैजा फरहद, फैजा फरहद, ओके। नेक्स्ट सुष्मिता कुमारी, सुष्मिता कुमारी, सुष्मिता कुमारी पीजी स्टूडेंट। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, अरिजीत रॉय। Yes, Arijit Roy. Okay. Can So I be you are audible? available? You are from Yes. Vinoba Bhave University, Arijit? No, I'm from Vishwabharati University, Shantiniketan, West Bengal. It's written here I'm a VBU. research scholar. Okay. Yes, And your topic is Vishwabharati. involvement of Involvement of artificial intelligence of of the the current current research academy. academic trends in India. Okay. Arijit, you will Okay. be given only 4 minutes, so try to conclude yourself in 4 minutes only. Okay. Okay. Thank you so much. I give my cordial thanks to the authority and the coordinator and all respected professor for giving me this opportunity to present. I was supposed to present in offline form, but I'm traveling since I giving apology. So my evolvement of the artificial intelligence of the current research academic trend in India, abstract. We can define simply that artificial intelligence, the field which combines computer science and robot data set to enable problem solving of the various aspects. It is a wide-ranging branch of computer science concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. Where AI is interdisciplinary science with multiple approaches, advancement in machine learning and deep learning in particular are creating paradigm shift in virtually every sector of the tech industry. With its giganticity of the spectrum in today's peak paramount digital civilizational era, AI is taking a brightening significant role in the world of research as well as in our country in India too. This, my research paper, will look through some of its core elements at a summarized glance from the point of view of the content analysis as well as some new findings. I'm afraid I cannot able to read the whole paper. I have already submitted to the authority some of the core elements. Since I'm giving 4-5 minutes, I'm just stating state of the field in India's artificial intelligence policy landscape of today. This development, adoption of AI have been visibly high on the list of priorities of the Indian government and the state government in a various aspects. An approach that's based on the premise that artificial intelligence has the potential to make labor easier and make society and the research sphere more equal. The Union government in 2018 allocated substantial funding towards the research, training, and the scaling in emerging technology like artificial intelligence, 100% increase from previous investment. This prioritization of digital technology is hardly new. The Indian government Digital India initiative is aimed to transform India into a digitally empowered society and knowledge hub economy in terms of university field also. Digital India envisages
providing digital infrastructure as a core utility to every citizen, incorporating such digitalizations in governance and ultimately leading to the empowerment of the citizen. This increase in funding towards the research, training, and skill in various emerging technologies such as AI in the academic sphere. While AI has featured an important consideration in the digital technology broadly in our university and the academic sector, a number of initiatives focused solely on AI have also emerged. These sections will offer an analysis of certain salient features of each initiative in the scope of this article. AI Task Force and Niti Aayog, this is a big one. I'm just first that I'm just reading. The National Institution for Transforming India, a government-run think tank, has been tasked with producing a national AI policy to direct the government AI effort. In an effort to boost economic productivity in India, Niti Aayog teamed up with Google in early to develop the startups look to develop the integrate AI-based solutions in their business models along with the academic sphere. Niti Aayog also entered in the statement of the intent of ABB India to make key sectors of Indian economy ready for the digitalized future and realize the potential of AI in the possibility of the academic sphere. Some of my two new findings of which can be implemented from the content analysis would be the automations of data. Artificial intelligence is also used to optimize resources in various spheres of today's academics in universities and research laboratories, automate the acquisition of data, and facilitate the synthesis of analysis of complex data sets. For example, AI has recently been used to help manage an activities in large scale long-term studies by providing real-time guidance. An AI system may able to monitor the health of each participant in a study in a research field and alert researcher or the scientist if a participant's status changes. Basic algorithmic tools. In the past 10 years, application-based of AI algorithm have played a significant role in various fields and subjects on the basis of the prosperity of the deep learning framework and the platform which has been founded. AI framework platform reduce the requirement of assessing AI technology by integrating the overall process of algorithmic development, which enables researchers from different areas to use across their field, allowing them to focus the design, the structure of the neural network and the convolutional neural network CNN and recurrent neural network RNN and LSTM conveniently, and that significantly reduce the cost of applying AI models, and that can be implemented tech giants like in researching AI framework. Google developed the famous open source framework in TensorFlow, while for example, and that can be implemented here in our academic sphere in India. My concluding remarks would be from the reservoir of Indian thesis, Shodh Ganga, etc., to all the venture of research academics in now in the significance of artificial intelligence has been in the realm of rules. It has been asserted that AI affects the nature of humans, their intelligence, and the decision-making process. With the advent of AI, there is a concern over how its creation could affect human beings, including encouraging biases in human thought process. A common concern is that machines would become smarter than human and then gain the control. Regardless, AI is proving a powerful tool for connecting information and drawing new hypotheses in the research field. And this hypothesis will create the further hypothesis to solve more hypotheses throughout the artificial intelligence in future in our research field. Thank you so much. Thank you. Thank you, Arjit. Thank you. Thank you so much. I give my... Now next, Mr. Ali Khan. Mr. Ali Khan. Mr. Ali Khan. Okay, the next, Dr. Chayapat Vipda. Chayapat. तो अभी next जिन्होंने ज्वाइन किया and want to present the paper. और कोई है इस सेशन के जिनका
जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है? Yes, ma'am. Okay, your name please. Good morning, ma'am. My name Preeti Misra. प्रीति मिश्रा, आपका इसी सेशन में है प्रेजेंटेशन? मैम टाइमिंग तो फिलहाल ये वाला नहीं था, 10:30 से 11 था, तो मुझे लगा अभी है तो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। आप अपने सेशन में प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, और कोई है इस सेशन में जिनका रैंक क्या और जिन्होंने देर से ज्वाइन किया? दीपक सर, मुझे लग रहा है nobody is there to present, so you can conclude the session, sir. Okay, ma'am. We have given remarks for two presenters, Amit Kumar Pandey and Vivek, and Nancy and Arijit Roy left during the period of their paper presentation. What you ask? Are you asking something? No. I have no any question, but I have some remarks. Nancy work on national education policy implementation and awareness, and his presentation was so beautiful, and his remarks, his conclusion on NEP really it's demanded today to spread awareness about national education policy, because there are a lot of confusion within the assistant professor and other academician, as well as the people who involved in educational system. Students are also confused. So the study provided by Nancy, and I suggested that this type of research should be published, because that is the era of awareness about national education policy. So their work is so valuable and remarkable for the awareness about NEP, and we the people like students, mostly students, will be benefited from this type of work. Arijit Roy really started his discussion about use of artificial intelligence in the field of education. That is a challenging task for us, but in various foreign countries, and even America and US and Britain also started this kind of work in their educational system. I think that his main conclusion is to use or application of artificial intelligence in the Indian education system, and with the use of this kind of technology, with the use of artificial intelligence, we can better various fields like technology, like medicine, like it may I call that Western education system, which provided by the British colonials to us, and that will be much more helpful to simplicate the problem of those subject complexity. And in this meaningful conversation, Arijit Roy presented very well and gave some suggestions and manifested very well in this regard and in this manner to provides us a basic knowledge about artificial intelligence and application of this kind of knowledge. Thank you, ma'am. Thank you, Deepak sir. I would like to ask Anand, Dr. Anand Kumar Tripathi sir.
डॉक्टर आनंद? जी जी सर, क्या सुनाई दे रहा? Sir, हेलो yeah. Sir, I would like हेलो, to. Yes, sir. आप सुन रहे हैं? क्या मुझे बोलने को कहा गया है? Yes, yes. आप प्लीज कुछ शेयर कीजिए अपने इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को with the participants, and you can ask questions also from the presenters. जी जी, क्योंकि मेरी तरफ से थोड़ा सा ऑडियो में हो सकता है बीच बीच में व्यवधान आए, ट्रेन में हूँ, नेटवर्क एरर हो सकता है। Yes, sir. तो फिर भी जब तक सुनाई दे रहा मैं अपनी बात तो कहता हूँ। अभी डॉक्टर दीप ने बहुत रिमार्केबल रिमार्क्स दे दिए हैं पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी प्रेजेंट किए उनके लिए। इसमें जो खास बातें हैं ध्यान देने लायक, हालांकि इनिशियल पे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं बीबीए, वो पेपर प्रिंट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक का आउटपुट के पेपर में देखने को आता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड एसे वो करने में अभी उतना सक्षम नहीं होते, कोई प्रयास है तो हम ये होना चाहिए यूनिट ऑफ योर रिसर्च पेपर में सामान्य बातें लोग जानते हैं बुक्स में, आपने क्या उसमें से पिक आउट किया, उससे आपने निकाला है कि पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो लोगों को कुछ नया मिले, कि आपने 2 4 5 पुस्तकें अच्छी पढ़ी, सर्च करें तो अच्छी बातें आए सुनने में और अट्रैक्ट करें और वो अपीलिंग। एक बात तो ये है। दूसरी बात, पेपर प्रेजेंटेशन के बाद तो एनईपी पे बहुत अच्छा प्रेजेंट किया नैन्सी है, जो सुन नहीं पाया। तो एनईपी पे उन्होंने जैसे कहा कि अभी विमेन खास तौर से जो है वो उतनी अवेयर नहीं है, यानी अभी थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, लेकिन उससे जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, रिन्यू की पुरानी पॉलिसी में, या फिर वो किस हद तक उद्देश्य को, भारत कहाँ पे जाए आने वाले समय में, भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, इस बात को सिद्ध करने में पुरानी एनईपी सक्षम नहीं थी, जिसको फुल करने का पॉलिसी ने किया है। और चाहिए ऐतिहासिक और तो दीपक सर ने उस पे वो काफी लंबा टाइम भी होता है। I think. Respected authority, can I speak a word from behalf of me if I am audible? This is Arijit, right? Arijit, Yes. you want to say something? Yes, yes. If I'm allowed to say, then I can say something. First of all, I am giving my cordial thanks to the respected professor who just
give me adulations and appreciation for my paper. And I would love to congratulate Magadh University for in organizing this kind of effort after a long time probably, and giving me the chance. And just to conclude that, when in regard of my paper, when we see artificial intelligence, it's like a very big, probably complicated science of something. But if we see in a very simple way that today in post-COVID world, what we are seeing that we are making a research seminar or a research paper presentation or a seminar in a Zoom platform. So this is the omnipotence of artificial intelligence, I believe, in a most simplest way. And artificial intelligence is the future of our social science, of our humanity, and the all academic sphere. So just 5 years ago, it could not be imagined that a seminar can be done in a Zoom platform or Google Meet platform. So this is the power of artificial intelligence. I wish I could able to give my full paper, but with the constraint of the time, I just given the 5 minutes some core element. So again, I'm giving my cordial thanks to the all authority and the professors and everyone for my remarks, and thank you so much. Thank you, Arijit, for your beautiful words. Thank you so much, madam. अरिजीत Yes, sir. ऑनलाइन का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, जैसे ऑनलाइन हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वी आर ड्राइविंग एंड मिस्टर आनंद कुमार त्रिपाठी इज ट्रैवलिंग for their college or for their university. So that is the problem. अन्यथा हम रिमार्क्स भी थोड़ा समय लेके देते तो आपके पेपर का रिमार्क्स भी बहुत अच्छा होता, बट yes sir, really a good paper. You have done a good paper, and I think that the artificial intelligence involved in each and everyday life of every people. Exactly. So दीपक सर, मैं हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ वही सर, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। अरिजीत जी को पेपर वाकई एआई का इनका बड़ा अच्छा, खास तौर से इनकी जो वो बहुत अच्छी थी। बस उसमें थोड़ी चीजें हमें आजकल देखिए जो हम फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सभी लोग, उसका जो जरूरत है, जैसे आप ये हम यूज कर रहे हैं, इसमें एआई आ जाने से है क्या कि ये हमारे कैमरे को सेल्फ एक्सेस ले रहे हैं, और कई बार तो आप देखें कि हम लोग जो सोच रहे हैं डे टू, जैसे आप सोचे कि आपको सबसे बढ़िया चिली खानी है, मतलब देखें कि एक दूसरे ये चीज वहाँ के मोबाइल में गूगल के न्यूज में आता है, तो ये सब बड़ी ड्रॉबैक है, मतलब प्राइवेसी को लेके क्या कर सकता है, और इससे सवाल भी उठता रहता है, जरूरत है उसने कैसे। Yes sir, whatever you are saying is absolutely. I am not saying I am in favor of artificial intelligence. It has all its negative effects, but what I am trying to say through my paper, that it is become so omnipotent that without the smartphone, without the Zoom, we cannot live our life. So it has all its negative effects in our human brain and in our neural system. The next robotic science, it will to create that is the possible of to create a robotic like human brain. Ideologically I am against artificial intelligence, as the respected said just told that it is taking our all privacy in simple language, as simple as that, Google. So but the time is like so powerful. We should give thanks to artificial intelligence also, that because of that one of the professor is traveling in train, I am also traveling, so we are all connected in our research paper. Thank you, Arijit. So thank you sir, thank you so much sir, and all the best, and all respect, and all the best for becoming assistant professor. Thank you so much sir for your good wishes. Thank you. I respect you. Thank you so much sir. Dr. Vinita ma'am. Oh,
Okay, sir. So shall we conclude now? Deepak sir and Anand sir. हाँ हाँ गीता मैम So it was a very interactive session, and I would like to give my heartfelt thanks to the chair of the session, Dr. Deepak Kumar Srivastav, and the co-chair of the session, Dr. Anand Kumar Tripathi sir. You made the session very informative and interactive. And I must say, our participants must have learned a lot from you. And many thanks to the participants for presenting very informative and fruitful papers today in this session. So thank you so much. And now you can leave the session. No ma'am, 1 minute. Okay. I would like to thanks to you, Dr. Benita, for coordinating like a very good moderator. Thank you So so much, sir. thank you Thank you so to much. you. निश्चित And रूप से let's finish. बहुत आगे की बात है। Thank you so much, sir. So shall we leave the session, sir? ओके ओके मैम, और फिर हम लोग मिलें, बेहतर हो कि ऑफलाइन मिल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। So can you repeat what you said, sir, Anand sir? हाँ, आई सेड मैम कि नेक्स्ट टाइम हम मिलें और ऑफ में, ताकि ज्यादा इंटरेक्शन हो पाए और किसी That तरीके की would be टेक्निकल very ग्लिच ना आ interactive, पाए। yes, sir. Very fruitful, yes, sir. It was really very nice session. It was very interesting, nice, and enlightening session. Okay, leave now, na? Okay, so I think we shall leave the meeting, the session. Okay. Okay. Thank you, all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you.
Shamini ma'am? Shamini ma'am? Shall we start? Am I audible? Yes. Yes. You can start. Okay. Okay. So this is the second session of this second day of the 2 days seminar. Good morning, all of you. So today is the second day of the national seminar on current trends in research for developing New India, that is organized by Magadh University, Bodhgaya. So before starting the online paper presentation of this session, the second session of today, Dr. Vinita Kumari is Assistant Professor of PG Department of Commerce, Magadh University, Bodhgaya. I'd like to do a hearty welcome to all of you, our chair of the session, Dr. Shamini Srivastava, and co-chair of the session, Dr. Amish, sir. So before starting the session, I would like to give a brief introduction of the chair and the co-chair of the session. Dr. Shamini Srivastava, ma'am, is head of the Department of Psychology, Firoz Gandhi College, Raebareli, Uttar Pradesh. Presently, Dr. Shamini, ma'am, is working as an assistant professor. Before chairing today's session, Dr. Shamini ma'am has chaired and co-chaired different conferences and seminars previously. Ma'am has been a gold medalist in post-graduation. Dr. Shamini Srivastava has glorious academic career. She has a number of paper and book chapter published in renowned journals and has presented abundant of papers and seminars and conferences all over in India. Ma'am, you have organized a number of seminars, workshops, and deliver many lectures as resource person to the various seminars and conferences. And you have also edited a book with the title Women Living with Emotions. So, ma'am, we feel very lucky to have you as the chair of the session. And the co-chair of the session is Dr. Amish sir, who is an assistant professor in the Department of Psychology to the same college, Firoz Gandhi College, Raebareli, Uttar Pradesh. He's in this profession, teaching profession since 2013. You have organized many seminars and webinars. Dr. Amish sir has been awarded for the best paper presentation in an international conference sponsored by ICSSR. And one on 5th September 2021, you have been awarded with Shikshak Samman Award by the Vice Chancellor of University of Lucknow, and many more awards in your site, sir, in this series. So Dr. Amish is connected with many editorial boards also, international journals and association. So we are very fortunate to have you both to this session, and welcome all of the participants who are going to present. So ma'am and sir, there are 16 papers that are going to be presented in this session. So ma'am, over to you. Shall I call their names or you will conduct, ma'am? You can call. I will call. Yes, ma'am. I will call. I will call the participant by name and name. Okay. So Amish sir will call. Okay, sir. Okay. So thank you, Dr. Vinita ma'am, for your. You, sir. You, thank you, ma'am, Dr. Vinita ma'am. Thank you, Dr. Vinita ma'am, for your nice introduction.
Thank you very much. First of all, I want to congratulate all of you for organizing this national seminar, and also welcome to all the research scholar and the academicians, professors, and others for this national seminar. And due to lack of time, we are going to start the program. Thank you, ma'am. Thank you very much. First of all, I like to call Dr. Syed, sir. Dr. Syed, research scholar, Mirza Gali College. अरुणिमा राय, अरुणिमा राय, क्या आप सुन पा रही हैं आप? राकेश कुमार. Yes, sir. Arunima is present here, sir. I can see she is here only. Arunima Rai, yeah. Arunima Rai, your voice is not coming. Please unmute yourself. Arunima Rai, please unmute yourself. You are a research scholar in Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar. Your voice is not coming. I think, ma'am, we should proceed further. Otherwise, Yes, it yes, sir. will get Yes, delayed. please, sir. Please, sir. Rakesh Kumar. Yes, sir. Hello. Okay. Hello. Your topic of presentation is mental health in context of resilience and optimism. You are a research scholar in Department of Psychology, Magadh University, Bodhgaya. Rakesh ji, please start your presentation. Yes, sir. Good morning, sir. You have not made PPT? I'm Rakesh. Your video is not also coming. You are not visible. राकेश जी, राकेश कुमार जी, बिकॉज टाइम का आप ध्यान रखिए। आप लोग, टाइम बहुत लिमिटेड है और आप मल्टीपल सेशन है और टाइम का प्रोग्राम कंडक्ट कराना है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी हैं, तो आप लोग टाइम का ध्यान रखिए। Not started with Rakesh ji, you keep your camera on, please. आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपका वीडियो जो है ऑन करिए। I'm trying some technical issue. Please also Zoom meeting exit your camera. Not started, ma'am. आप 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए आपके हैं, ठीक है? 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए, 1 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करिए राकेश जी। कैमरा नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑडियो से। Yes. Good morning, all of you. I am Rakesh Kumar, research scholar, Department of Psychology, Magadh University, Bodhgaya. My topic is mental health in context of resilience and optimism. Urgent empirical study is carried out on 64 adults with the objective to examine their mental health status in context of resilience and optimism. It was hypothesized that first, resilience and optimism will have significant influence on mental health among adults. For the purpose, respondents were administered resilience scale by Vijaya Lakshmi and Shruti Narayan, mental health battery by C and Sen Gupta, and optimism scale by Prasad to measure resilience, mental health, and optimism of the respondents. Beside this, respondents were administered to seek their personal information, obtained data on resilience and optimism scores were subjected to median cut and divided into high and low resilience group as well as optimistic and pessimistic groups. Thereafter, the 4 independent groups were compared on the measure of mental health.
It was found that high resilience and optimistic group of respondents excelled over their counterparts group of respondents in terms of having sound mental health. Thus, hypotheses were written. The findings were interpreted on the characteristics of resilience and optimism. It was concluded that high resilience and optimism both are conducive to sound mental health. Thank you. थैंक यू राकेश जी। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए ध्यान रखिए कि आपको जो है ठीक है रिकॉर्डिंग मोड में लगा हुआ है, सब रिपोर्ट दिया जाएगा और आप कम से कम पीपीटी बनाएं और जो है प्रेजेंटेशन के लिए आप अपना कम से कम वीडियो तो ऑन रखिए। आप लोग रिसर्च स्कॉलर, आप लोग जो भी अभी इस तरह की आप सीखेंगे नहीं, आगे आप बहुत सारी समस्याएं होंगी आपको। रंजीत कुमार, आए? हेलो। यस सर, हेलो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यू आर ए रिसर्च स्कॉलर इन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार, and you जी will सर। present on the topic effect of academic performance on the mental health of students. जी सर। Audima Arai, please start your presentation. जी सर, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? No, it's not visible. सॉरी सर, पीपीटी नहीं शो हो रहा है। मैं अपना पेपर प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। A very good morning to all present. Myself Arunima Rai, research scholar ललित। वीडियो ऑन कर लें। अरुणिमा जी वीडियो ऑन कर लें आप अपना। एक्चुअली मैम नेटवर्क इश्यू है, वॉइस नहीं जा रही थी इसलिए ऑफ किया। कम से कम इंट्रोडक्शन के लिए तो बोलना चाहिए, मतलब इतना तो और आप लोग। A very good morning to all present. Myself Arunima Rai, research scholar, Lalit and Mithila University, Darbhanga, Bihar. Today we have gathered here to discuss the topic. The topic is effect of class performance on the mental health of students. What is class performance? Class performance, also defined as academic performance. Students' class participation and engagement takes a significant role over today's higher education. The association between students' class attendance and academic performance had been the subject of several studies in a wide variety of courses. Reports from previous studies have proven that attendance is a significant variable which affects academic outcomes. Suchmit's 1983 proposed that time spent going to lecturers contributed to a successful achievement in a microeconomic principles courses. Mental health. Mental health is all about how people think, feel, and behave. According to WHO, mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stress of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Mental health specialists can help people with depression, anxiety, addiction, and other conditions that affect their thoughts, feeling, and behavior. Bhatia's 1982 considers mental health as the ability to balance feeling, desire, and ambitions and ideals in one's daily living. It means the ability to face the accept to reality of life. The study was designed to check the effect of classroom environment on the mental health of postgraduate students. Objective of the study were to assess academic performance of the students as well as its effect on their mental health. The study was of descriptive nature and survey method was used to collect the data. The self-designed interview schedule and standard questionnaire for mental health by Mental Health Inventory MHI, Jagdish and Srivastava were used to collect the data. A total number of 100 students for different departments of Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, were chosen as a sample for the study. This study concluded that there was negative and significant relation between class performance and positive self-evaluation of the students. Negative but non-significant relation was observed between other mental health parameters like
perceptions of realities, integration of personalities, autonomy, group-oriented attitudes, and environmental competence correlate the students' class performance. It was recommended to the students to attend regular classes, submitted assignments and projects on time, as well as do proper planning of academic and extracurricular activities to maintain good mental health. Thanks to audience for presence, to listening to me. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. और सभी के पीपीटी काम नहीं कर रहे हैं, सबको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और ये सब समस्या इस संयोग है कि प्रयोग है। सो सॉरी सर, मेरी पीपीटी रेडी है बट शेयर नहीं हुई, पता नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि ये एक साथ सबके साथ यही हो रहा है ना, इंटरनेट वगैरह पहले से आपको वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे बेहतर हो। इंडस्ट्री के लिए आप लोग ये इस तरह से चीज नहीं रहता। रंजीत कुमार। हेलो। हाँ, रंजीत कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और you are a research scholar in Patliputra University and you will present on the topic quality of life and coping with stress in context of योग निद्रा। ठीक है, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन रंजीत जी। माय नेम इज रंजीत कुमार एंड आपका भी इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, पीपीटी नहीं है सर। एक्चुअली कम से कम चेहरा तो दिखा दीजिए कि आप कौन हैं, लोग पहचान तो लें। सर एक मिनट, काम कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर समस्या है क्या? लीजिए। हाँ मैम। रंजीत जी वीडियो ऑन कर लीजिए। ये एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, सबके साथ ही नहीं हो सकता। या तो आप लोग सीरियस नहीं है। सर एक्चुअली कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, वो तो समस्या रहेगी, किसी का कैमरा नहीं ठीक रहेगा, इंटरनेट, ये तो 3 प्रॉब्लम तो कॉमन है सब में। रंजीत जी एक बार ट्राई तो कीजिए, जस्ट गिव अ ट्राई। सबका कैमरा ही खराब। Am I visible? आप बिल्कुल बहुत अच्छे You are not से यू स्टार्ट लाइक दिस ओनली प्लीज। कैमरा ऑन। Yes. Start. May I start, sir? You should start. The topic is, my name is Ranjit Kumar and the topic is quality of life and coping with stress in context of yoga nidra. Present study is a comparative study between regular yoga nidra and practitioners and non-practitioners on the measure quality of life and coping with stress. It was hypothesized that a respondent of experimental group, yoga nidra practitioners, and control group, non-practitioners, will differ significantly in terms of quality of life, coping with stress. For the purpose, 30 respondents belonging to yoga nidra practitioners groups and non-practitioner group were selected using purposive sampling. Thereafter, the respondent of 2 groups were administered quality of life and coping with stress scale, Lakshmi and Narayan example, to seek information and measures with variables. The obtained data are regarded as data in preconditions. Thereafter, a regular practitioner group and subjected to yoga nidra training for a month, half hours daily and 4 days in a week. Control group was not given such training. Thereafter, data on the same measures were collected. Finally, the data were analyzed by using p-value, finding confirmed the hypothesis. It was found that quality of life and coping with stress scores improved more for the subject of experimental condition. Thus, it was concluded that yoga nidra practicing improves quality of life and increases the handling capacity to cope with stress. Thus, it can be concluded that practicing yoga nidra is conducive to both quality of life and coping with stress respectively. Thank you, sir. Okay, thank you. Sahila Sagar. सहीला सागर, आप सुन पा रही हैं? Yes, sir. You are a research scholar in Patliputra University and you will present on a topic comparison between diabetes 2 and non-diabetes in terms of personality pattern and lifestyle. Yes. Please start your presentation. Yes, sir. You have PPT? Good morning, sir. आप PPT है? Yes, sir.
You सर have made a पीपीटी PPT or not? पीपीटी है, लेकिन वो अभी भेज नहीं सकते, शेयर नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग सर मैम, I am वीडियो Shaila ऑन Sagar, करिए। research scholar, Department of Psychology, Patliputra University. Now I am starting my presentation and my topic is comparison between diabetes 2 and non-diabetes in terms of personality pattern and lifestyle. The present empirical investigation was carried out with intention to compare diabetes 2 with normal person on personality and behavior pattern as well as lifestyle. It was hypothesized that diabetes 2 and non-diabetes will differ significantly in terms of behavioral or personality pattern type A and type B and lifestyle. For the verification of hypothesis, 50 diabetes 2 and 50 non-diabetes or normal were selected based on purposive sampling. Diabetes were selected from outdoor clinic and on the basis of personal contacts. The respondents of the two groups were administered personality pattern scale type A and type B by Dhar and Jain, Manisha Jain and Upendra Dhar. Lifestyle inventory by Alam along with self-developed social demographic and clinical data set to measure the variable to seek the necessary information. Obtained data were analyzed using chi-square. The finding confirmed the hypothesis. It was found that most of diabetes 2 were found position and holding a trait of diabetes A personality pattern. The finding was interpreted on the characteristics of diabetes A and diabetes 2 personality pattern. For the respondent belonging to diabetes 2 manifested very poor lifestyle as compared to normal group of respondent. Thus, it was concluded the respondent of diabetes 2 manifest a behavior pattern, whereas normal respondent normally manifest and hold both type of traits, type A and type B, diabetes 2. Lag behind in lifestyle than normal. Thank you, sir. थैंक यू मैम। इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाया था आपने कोई? आपकी एम्पिरिकल स्टडी है ना? Yes, sir. इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था डायबिटीज के लिए? इंक्लूजन में सर था कि मेरा ये एबव 45 years diagnosed the diabetes 2 by physicians, at least 2 years of duration of illness, taking oral medicine only, mixed in perspective of gender and religion, education who can read and understand English as well, cooperative. फिर इसमें एक लिए थे नॉन डायबिटीज के लिए एबव 45 years, mixed in respect of gender and religion, no past history of mental illness, physically fit, cooperative, education, so that read and understand English. Okay. Aparna Jamwar, Aparna, are you here? Aparna, you are present? Yes, sir. You are a research scholar in Yes, sir. University, Present, and sir. you will present on the topic role of social media addiction on mental health of students. Yes, Kumar ji, please mute yourself. Yes, sir. Yeah. Good morning. Good morning, Amish sir, Shamini ma'am, and Vinita ma'am, and all my fellow researchers. Akhilesh Kumar ji, please unmute yourself. You are disturbing the other person. This is Aparna Jamua, research scholar, Patliputra University, Patna, and my topic is role of social media on mental health of students. This was a correlational study. In the recent years, the mental health community has become, just a second, sir, I want to share my screen also. The entire screen.
Yes, it is visible. Continue. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. So, in recent years, the mental health community has become increasingly interested in the impact that modern technology has on our lives. On the positive side, technologies such as WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, etc., allows us to stay in contact with family and friends. Yet, unfortunately, people spend hours every day updating their status, uploading pictures, commenting on walls, playing games, reading updates on others, and searching for new friends to add. According to researchers, the more time you spend on social media, the more likely you are to suffer from mental health. Let's have a quick look at the objectives of the study. The objectives were to understand the impact of social media addiction, to understand various aspects of mental health, and to find the correlation between social media addiction and mental health among college students. Social media addiction is defined as compulsive and excessive use of social media, even when use of those platforms is taking over your life and having a negative effect on your real life and relationships. The research methodology used was sampling was done, incidental cum purposive sampling was undertaken for the study. 200 samples, 100 UG and PG students were selected, and method of data collection was questionnaire and personal interview. The scales used during the study were the mental health battery designed by Dr. Arun Kumar Singh and Dr. Alpana Singh Gupta 2000. And for social networking addiction scale, it was the scale developed by Mohammad Ghazi Shahnawaz and Dr. Nivedita Ganguly Manchong Limlun Thang Zhou was used for measuring the social media addiction, and self-developed personal data blank was developed to obtain the basic information of samples. Statistical techniques used for the study were arithmetic mean, standard deviation, t-test, and Pearson's product moment correlation. And the result was, the table shows here the values found in the study. Pearson R is found to be minus 0.46. In the table of Pearson R at 0.01 level for 98 DF is 0.254. The obtained value is higher than the value in table, which suggests that the two variables visible, social media addiction and mental health, are fairly coordinated, and the negative value signifies the negative correlation. That's all from my side. Thank you so much for the patient listening. So, ओके, थैंक यू। आर का मान बहुत कम आया हुआ है, फिर भी सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट्स में एक बार देखिएगा दोबारा। और ये इंसिडेंटल कम पर्पजिव सैम्पलिंग का आपने मेंशन किया है। इंसिडेंटल कम पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होता है? प्रणाम है सर, आपकी आवाज नहीं आई सर। मैम ये कह रहे हैं कि आपने जो है इंसिडेंटल कम पर्पजिव सैम्पलिंग मेंशन किया है, तो थोड़ा सा जो है सैम्पलिंग मेथड मतलब आगे फ्यूचर में देखिएगा, इस तरह के सैम्पलिंग मेथड इस तरह से नाम नहीं लिखे जाते। ओके, जी सर। सर एक सेकंड सर, मैं आपका सजेशन मैं नोट करना चाहती हूँ। जी सर। मैम आप सैम्पलिंग मेथड आप देखेंगे तो इंसिडेंटल कम सैम्पलिंग मेथड इस तरह से नहीं होता है। इंसिडेंटल कम पर्पजिव सैम्पलिंग आपने लिखा है, तो यस सर। कम पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड इस तरह से नहीं होता है। इंसिडेंटल सैम्पलिंग अलग होता है, पर्पजिव अलग होता है दोनों। ओके।
ठीक है सर, आई विल सी इट अगेन। मैं अगली बार काम करूंगी तो उसको बेहतर समझूंगी। श्रद्धा सिंह, आप सुन पा रही हैं? आर यू हियर? श्रद्धा सिंह, डॉक्टर शकीला आजिम, डॉक्टर शकीला आजिम, आप सुन पा रही हैं? आर यू हियर? मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, Sir, I am there. Shraddha Singh is there. हाँ श्रद्धा सिंह, But screen is like, sir, you are a research scholar in Department of Psychology, Lucknow University, Lucknow, and you will present on the topic impact of personal stress on the organizational committee of managers. Yes, sir. Shraddha? Yes, I would like to share my screen, sir. Okay, okay. Thank you very much. Start. Please continue. Sir, I'm having like two screens on my, the earlier one also and the initial one also. How can I share my screen? There is no option there. I can see your screen as well as my screen on this. There will be option. Please see your lab. Just a minute, sir. Let me. Okay, sir. I'm going to share my screen now. Hopefully it will be shared. Is it shared, sir? Yes, it is visible. Please continue. Is it visible? Okay, all right, sir. So, respected chairperson, board members, and fellow research scholars, I'm Dr. Shraddha Singh, and today I feel really honored to participate to present my paper in this conference organized by Magadh University. And my topic is impact of occupational stress on the organizational commitment of managers. I have cited Hans Selye here. I've quoted him because he says that it's not stress that kills us, it is our reaction to it. Actually, Hans Selye is considered to be the father of modern stress research, and he introduced stress into behavioral sciences in 1936. So I would like to move on to the next one. Sir, how to move to the full screen? I'm unable to see the full screen on my. You may continue like that. आपको स्लाइड शो में आप जाएंगे वहां पर आप करेंगे तो आएगा. You can just press F5. F5. It's not like F5. Okay, all right. I am just, in case something wrong happens, that's why I'm not pressing any key. Please, this is there. So let me do it on the full mode, sir. You can start what you like. Okay. So I'm sorry for the inconvenience. So human resource, I'm going to start with the abstract now. This will give a brief summary of the entire paper, and I've summarized it here. Human resource is the key resource for any organization, even in today's modern advanced technological era. Development of human resources is essential for any organization that would like to be dynamic and growth-oriented. Human resource development system aims at creating such a climate that increases organizational commitment and reduces occupational stress, thereby enhancing psychological well-being. Organizational commitment can be defined as, in simple terms, individuals' identification with and loyalty to the organization. Since I've taken the sample of managers, so I'm going to talk about a little bit about managers. They provide purposeful direction to the organization and managers its survival and growth. They widely differ in their commitment to the organization. Due to the increased job complexities and technological advancement, stress has become common in organizations. In the present study, an empirical attempt has been made to examine the impact of occupational stress on the organizational commitment of managers. Organizational scale, I have taken two scales here.
Organizational commitment scale developed and standardized by Mayer and Edlin in 1984, and occupational stress index developed by Srivastava and Singh in 1981. These were administered on a sample of 200 managers of Tata Refractory Limited, Belpahar, Jharsuguda, Odisha. Appropriate statistics used in the study were mean standard deviation and critical ratio. Results indicated significant adverse impact of occupational stress on the organizational commitment of managers. Sir, can you just move on to the next slide, sir? I can click on the next slide. Okay, I can do it myself, yes. So, introduction is like organizational commitment. I'm going to define organizational commitment and occupational stress very briefly. Directly on the results, sir? No, on the method and then result. Okay. Let me tell you the objective of the study again. The objective of the study was to find out the impact of occupational stress on the organizational commitment of managers. And the hypothesis was, in the light of available literature, there is significant difference between the mean organizational commitment scores of high and low occupational stress groups, overall and area-wise. Design and methodology. Organizational commitment has been treated as dependent variable and occupational stress was treated as independent variable. Two groups of occupational stress, that is of independent variable, were identified, high and low. And the statistics were mean standard deviation and critical ratio that were computed. And the sample was 200 managers incidentally selected from Tata Refractory Limited, Jharsuguda, Odisha. And the explanation of TRL was established in 1958 as a joint venture of Tata Steel and General Workers, Germany. And I'm not going to explain it much. Procedure was the managers of TRL were contacted to participate in the research study, and they were asked to fill up personal data sheet. Occupational stress profile and organizational commitment scale were administered to them, and they were asked to respond to the questionnaire as per the instructions given and written there. And they were told that information will be kept confidential and used for research purpose only. The tools were Occupational Stress Index, OSI, and developed by Srivastava and Singh in 1981, and the Organizational Commitment Scale developed by Mayer and Ellen in 1984. The Occupational Stress Index included 12 dimensions of occupational stress. These were role overload, role ambiguity, role conflict, unreasonable group and political pressures, under participation, responsibility for persons, powerlessness, poor peer relations at work, intrinsic impoverishment, low status, strenuous working conditions, and unprofitability. This is the result table. As you can see, it includes the mean, standard deviation. Conclusion type. Okay. The discussion interpretation of results was that the mean organizational commitment scores of low occupational group, overall and area-wise, was found to be higher as compared to high occupational stress group. Mean difference was found to be significant at 0.01 level. The critical ratio between organizational commitment scores of high and low occupational stress groups, overall and area, was found to be statistically significant. And it was found that managers having low level of occupational stress showed high level of organizational commitment and vice versa. So I would like to conclude by saying that occupational stress is detrimental to the normal functioning of individual at his workplace, and it adversely impacts organizational commitment of the employees, leading to lateness, absenteeism, turnover, decreased productivity and performance. And I have cited just two research studies in support of this particular study that I have done. And
rest in the research paper. Stress coping strategies should be adopted both at the personal and at the organizational level. And this will not only reduce stress, but enhance psychological well-being of employees in general. And at the organization level, a lot of efforts are being made these days to reduce for stress management and to reduce the stress level of the employees. So thanks, that was all about it. And sorry for the inconvenience. Actually, the slides were slightly. No, ma'am. Thank you, मैम एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसमें आपका नाम श्रद्धा सिंह था, दैट्स व्हाई ठीक है आपका नाम श्रद्धा सिंह है। आई थिंक योर नेम इज Sir, your voice is not very audible to me, sir. Can you please? मैम हेलो। Yes, sir. वॉइस आ रही है अभी आप सुन रही हैं? सर थोड़ा सा वैसी हो रही है, मतलब ऑडिबल नहीं आ रही है। इंटरनेट ठीक है इधर से कनेक्टिविटी। एक्चुअली मैम जो का नाम था वो श्रद्धा सिंह था, एक्चुअली आपने में अच्छा श्रद्धा सिंह लिखा था, ठीक है। इसी जो डॉक्यूमेंट आपका जो डेडिकेशन था वो रिसर्च था। नहीं, डॉक्टर श्रद्धा सिंह एक्चुअली सर, उसमें डॉक्टर मिसिंग हो गया था सर। उसमें मेंशन था रिसर्च स्कॉलर था, पर आई एम सॉरी फॉर दैट। जो भी जो इंफॉर्मेशन था जैसे आपका नाम पड़ा। ओके सर, ठीक है मैम, मेंशन था। थैंक यू। डॉक्टर शकीला जी, thank you sir. I'm going to close it now. डॉक्टर शकीला मुकेश कुमार, सोनी कुमारी, सोनी कुमारी आप अनम्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज नहीं है। सोनी कुमारी, नेहा सानी, नेहा सानी, प्रीति मिश्रा। यस सर। हाँ, you are a research scholar in Magadh University and you will present on the topic वर्तमान समय में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, संतुलित आहार, योग। ठीक है, तो इसे आपने हिंदी में से मेंशन किया है, तो Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Preeti Misra. I am research scholar, Home Science Department, Magadh University, Bodhgaya, Bihar. My topic is वर्तमान समय में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, संतुलित आहार और योग। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं होती, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना अति आवश्यक है। संतुलित आहार व योग से शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकार जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म, डिप्रेशन, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, भ्रम इत्यादि आते हैं। इन सभी बीमारियों के लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास रहना, ध्यान केंद्रित न करने की क्षमता में कमी, अन्य गतिविधियों से अलग थलग और थकान, निद्रा की समस्या मानसिक बीमारी के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि शरीर के सभी अंग और तंतु शरीर के पूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ त्वचा, चमकदार आंखें, बाल, सुगठित शरीर व अन्य रोग जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गठिया रोग इत्यादि से मुक्त माना जाता है। और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या को नियमित करे, प्रतिदिन व्यायाम करे, योग करे और साथ ही साथ संतुलित आहार का सेवन करे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पूर्णतः एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक कार्य करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की अच्छी सेहत को संबोधित करता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य मन की अच्छी सेहत को संबोधित करता है। इन दोनों स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है। साथ में योग और व्यायाम भी काफी हद तक लाभदायक होता है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें खाद्य समूहों जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, वसा इत्यादि खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं, जिससे यह आहार सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सके। संतुलित आहार के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव और अवसाद कम होता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी काफी हद तक प्रभावित होता है। योग और व्यायाम के माध्यम से भी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को अत्यंत लाभ मिलता है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे शरीर को शांत रखने में भी सहायता प्रदान करता है। चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार योग शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को भी बढ़ाता है, मन को शांत रखता है। जब हम योग करते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ जैसी क्रियाएं होती हैं और वजन भी नियंत्रित होता है। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, नींद न आना, सिर दर्द व तनाव की स्थिति जैसी समस्याओं को दूर रहने के लिए योग की सलाह दी जाती है। वर्तमान समय में मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए संतुलित आहार और योग की आवश्यकता है, जिससे अन्य रोगों का उपचार संतुलित आहार और योग के माध्यम से संभव है। भागदौड़ की जिंदगी में समय के अभाव में पैकेट बंद चीजों का इस्तेमाल अधिक से अधिक होने लगा है, या फिर आधुनिकता या फैशन के कारण भी पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का इस्तेमाल अधिक होता जा रहा है, जो शरीर के लिए घातक है। वहीं पर मोबाइल फोन, टीवी, सोशल मीडिया का अधिकाधिक प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जो वर्तमान समय में ज्यादा प्रचलन में है। अतः हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुचारू रूप से स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। फास्ट फूड खाने से बचें, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, जिसके कारण आदमी तनावग्रस्त न रहे, और वह योग और व्यायाम संतुलित आहार को दिनचर्या में अपने शामिल करें। थैंक यू सर। आपने पीपीटी नहीं बनाया था? जी सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर आवाज आपकी बिल्कुल भी नहीं आई, एकदम से भी। एक मिनट, अभी आ रही है? आप सुन जी पा रहे सर, हैं? अभी जी सर, अभी आ रही है। हाँ हाँ, कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, और लेकिन ये ऐसा नहीं होती। प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी वगैरह बनाया करिए। जी सर, वो पीपीटी हमारे वगैरह से पास चीजें ठीक रहती हैं। एक स्टैंडर्ड जो तरीका है जी वो सर फॉलो करना जरूरी होता है। कहीं पर भी आप सेमिनार दीजिए, कॉन्फ्रेंस दीजिए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखा जाए। जी सर। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जी सर। सदन अमरीन, सदन अमरीन, आप सुन पा रही हैं? शत्रुघ्न कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शत्रुघ्न यू आर कुमार सर बोल रहे हैं। हाँ, यू आर रिसर्च स्कॉलर मगध यूनिवर्सिटी। प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। जी सर। सर, शत्रुघ्न कुमार सोधी, मनोविज्ञान विभाग, मगध यूनिवर्सिटी। सर, मैंने पेपर दिया है सर, छात्रों में शैक्षिक चिंता एवं समायोजक का एक मनोविज्ञान अध्ययन। शत्रुघ्न जी वीडियो ऑन कर लीजिए अपना।
मैडम ऑन स्टार्ट कर करिए। लिया। ठीक है, स्टार्ट करिए। छात्रों में शैक्षिक चिंता एवं संयोजक का एक मनोविज्ञान अध्ययन द्वारा शत्रुघ्न कुमार सोधी, मनोविज्ञान विभाग, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का स्कॉलर है। मेरा यह अध्ययन प्रस्तुत शोध छात्रों में शैक्षिक चिंता एवं संयोजन का एक मनोविज्ञान अध्ययन है। बच्चों में शैक्षिक चिंता एवं संयोजन के प्रभाव का अध्ययन हेतु प्रदर्शक के रूप में जिला गया के 9वीं एवं 10वीं की कक्षा के 60 छात्रों का चयन यादृच्छिक प्रदर्शन विधि से किया गया है। प्रदर्शकों का संकलन हेतु छात्रों में शैक्षिक चिंता का छात्रों के समायोजन पर सार्थक अंतर को देखना रहा। छात्रों में शैक्षिक चिंता के कई स्रोत हैं, जैसे पुस्तकालय की चिंता, गणित की चिंता, विद्यालय की चिंता, परीक्षा की चिंता, भाषा की चिंता, प्रस्तुतीकरण की चिंता एवं सामाजिक चिंता शामिल है। प्राप्त परिणाम बताते हैं कि छात्रों में विभिन्न चिंताओं का उनके शैक्षिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव विभिन्न चिंताओं का उनके शैक्षिक योजना में सार्थक प्रभाव पड़ता है। अध्ययन व्यापक रूप से छात्रों के संयोजन के विभिन्न इकाइयों पर सार्थक प्रभाव कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विभिन्नताओं को देखते में पाया गया कि नवीन की उपेक्षा 10वीं स्तर के छात्रों में शैक्षिक चिंता अधिक है, क्योंकि आगामी बोर्ड की तैयारी एवं पारिवारिक सामाजिक दबाव उनके शैक्षिक चिंता पर अधिक पड़ता है, जिससे उनके समायोजन बाधित हो जाते हैं। अपेक्षाकृत माता पिता एवं अभिभावक छात्रों को विद्यालय के अतिरिक्त निजी संस्थाओं में भी शैक्षिक कार्य करने को भेजते हैं, ताकि उनकी समायोजक प्रभावित न हो। जबकि 9वीं कक्षा के छात्रों में समायोजक क्षमता एवं शैक्षिक चिंता निम्न दिखी गई है। अतः प्राप्त परिकल्पना छात्रों के शैक्षिक चिंता एवं संयोजक सार्थक को प्रदर्शित करती है। शैक्षिक चिंता समायोजन विद्यालय वातावरण, आर्थिक सामाजिक स्थिति एवं छात्रों के व्यवहार पर पड़ता है। सर, अध्ययन का उद्देश्य है सर, प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में शैक्षिक चिंता एवं समायोजन का एक मनोविज्ञान अध्ययन। हेलो, ये थ्योरेटिकल स्टडी है? जी सर। ये एम्पिरिकल है, आपने स्टडी किया है कि थ्योरेटिकल है? स्टडी किया है सर। हाँ, तो पीपीटी नहीं बनाई है आपने? सर मेरा मोबाइल गिर गया था कल सर, गाड़ी से जा रहे थे उसीलिए बना हुआ है, भेज देते हैं थोड़ा देरी में सर। आप मेथड और रिजल्ट पे आ जाइए। अब रिजल्ट बताइए, रिजल्ट्स पे क्या आया? रिजल्ट रिजल्ट बताइए। कंक्लूजन करिए। हाँ, रिजल्ट कितने सैंपल पे किया, क्या रिजल्ट आया, ब्रीफ में बताइए। दो सैंपल सर। 200 की 2 सैंपल? 2 सैंपल सर, जिला स्कूल और 3 मॉडल स्कूल। 30 कितने लोगों पे किया? 60 लोगों पर सर, 60 लोगों पे। पर। हाँ, 30-60 लोगों पर। क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट बताइए। निकट छात्रों की शैक्षिक चिंता और संयोजक पर चिंता संज्ञानात्मक, शारीरिक, प्रभावात्मक और व्यवहारिक विशेषता वाले घटनाओं की मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा या घटक एक अप्रिय भाव बनाने के लिए जुड़ते हैं, जो किसी आम तौर पर बेचैनी, आकांक्षा, डर और क्लेश से संबंधित है। चिंता समयावक मनोवैज्ञानिक है, जो कि पर्याय न पहुंचाने जाने
योग किसी अपना द्वारा उत्पन्न हो सकती है। देखा जाए तो यह भाग से कुछ अलग हो कि किसी अज्ञात खतरे के कारण उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भय भगाने और पारिवारिक विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित जब कंक्लूजन चिंता करिए, अनुभव कंक्लूड करिए, कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन क्या है ओवरऑल, हेलो कंक्लूजन बताइए शत्रुघ्न, निष्कर्ष बताइए। सर अपने अंदर जो प्रेशर रहता है ना सर, उसको हटाने के लिए अच्छी करता है। आप सुन पा रहे हैं, निष्कर्ष बताइए, जल्दी से खत्म करिए। छात्रों में शैक्षिक चिंता का छात्रों को समायोजक को देखा गया कि छात्रों के शैक्षिक चिंता में पुस्तकालय की चिंता, गणित की चिंता, विद्यालय की चिंता, परीक्षा की चिंता, भाषा की चिंता, स्पष्टीकरण, सामाजिक चिंता, शैक्षिक चिंता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके समायोजक बाधित हो जाते हैं। छात्रों का मार्गदर्शन करने और उन्हें शैक्षिक निर्णयों से संबंधित सलाह देना। ठीक है शत्रुघ्न जी, ठीक है, अब बंद करिए। थैंक यू वेरी मच। निधि राय, निधि राय आप सुना रही हैं? और जो लोग ज्वाइन किए उसमें से अभी बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया, हम वन बाय वन उनका नाम एक बार से ले रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सैयद, डॉक्टर सकीला आदि, मुकेश कुमार, सोनी कुमारी, नेहा साहनी, साधन अमरीन, निधि राय, आप लोगों ने presentation नहीं दिया है। आप लोग इसमें से कोई प्रेजेंट हो तो आप बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए। आप में से कोई प्रेजेंट है या अदर पर्सन जो उनको प्रेजेंटेशन देना है सेशन में? सर मेरा नाम सनी कुमार हुआ सर। सनी जी आपका नाम मेंशन नहीं है सर। मेरा 11:30 से 12:45 वाले लॉट में। वेट कर लीजिए सनी जी, आप वेट कर लीजिए। टाइमिंग जो है ये ठीक है, 10:15 से 11:30 पार्टिसिपेंट है उनकी बात हो रही है, ठीक। और 11:30 से जिनका स्टार्ट होगा उनका नाम बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप जितने प्रेजेंटर्स के नाम लिए गए हैं उनमें से कोई भी प्रेजेंट है? डॉक्टर विनीता मैम, विनीता मैम, यस सर, यस सर। हाँ मैम, टोटल 8 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है और उसमें Yes sir, out of 16, 8 people have been presented. सहीला, अपर्णा जमुआर, डॉक्टर श्रद्धा सिंह, प्रीति मिश्रा और शत्रुघ्न कुमार, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। Okay sir. Yeah, We have 16 presenters in this session, but only 8 have presented. Yeah, yes. Only 8 have been the paper have been presented. Yes, yes ma'am. हाँ मैम, I will share all the details with you. Okay sir, okay sir. After when the presentation will finish, I will share all the details with you. Okay sir. So you will share after the third session completed? Yes ma'am. Yes ma'am. I will share both the details simultaneously. Okay sir. So I think shall we start it? The time is 11:30, Yes right? ma'am. Yeah, 11:15. We can start. 11:30. 11:30. 30. It's 11:30. So 11:30 now. Time is 11:15. We can start. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay. Okay ma'am. Presenters are there. Then we can start. Yeah ma'am. Okay. Thank you so much ma'am for this session. Thank you so much sir for your wonderful cooperation ma'am and sir. Thank you so much. So now we shall wait for a few minutes, right ma'am? Okay. Okay.
Ma'am, no one participant of the third session has joined this session. I think they are waiting for 11:30 only. Ma'am, can I present, ma'am? My name is Kumar. Session for 11:30 to 12:15. Oh, sorry, 12:45. Okay, so let me ask to the chair and co-chair of the session. Shamini ma'am, Amit Shah. Shamini ma'am. Okay. Shamini ma'am, if you permit, we can start the session. Yes, yes. Now, Okay, ma'am. Okay, sir. So, we have 15 presenters in this session. yes, ma'am. And I think they are waiting for 11:30. Yes. Because only one person or one participant has joined the session at this time. So we shall wait or what? Shall start? We can start, ma'am. Okay. We start. We are starting now. Okay. Yes. Yes, Yes. ma'am. So again, a very good morning to all of you. And again, this session is going to be chaired by Dr. Shamini Srivastava ma'am and Dr. Amit sir. So this is the third and the last session of today's online technical session. And that is now going to be started in a few seconds only. The theme of this session is mental and physical health. So before starting the session, I would like to give a very brief introduction of our chair and co-chair to the new participants of this session. So the session is going to be chaired by Dr. Shamini Srivastava. You are again welcome, ma'am. You are head of the Department of Psychology, Firoz Gandhi College. Raebareli, Uttar Pradesh. Presently, you are an assistant professor, and you have already previously chaired and co-chaired many events, many seminars, conferences. You are gold medalist also, ma'am, and you have a glorious academic career. You have number of paper and book chapters published in renowned journals, and you have presented many seminars and conferences. You have organized a number of seminars and you deliver many lectures to the various institutions, organizations, universities. And you have also edited a book with title Women Living with Emotions. So now about our co-chair of the session, Dr. Amit sir. You are also welcome again, sir. You are an assistant professor of the Department of Psychology, Firoz Gandhi College, Raebareli, Uttar Pradesh. You are engaged in this profession since 2013, and you have organized many seminars and webinars.
And Ms. Sir, you have been awarded for the best paper presentation in the international conference and sponsored by ICSSR. And also you have awarded with some Shikshak Samman Award by the Vice Chancellor of University of Lucknow on 5th of the September 2021. You are also connected with many editorial boards, international journal and association. So we all welcome you, sir, for this session. Thank you, Dr. Vinita ma'am, for your nice introduction. Well, thank you. Okay, sir. And so over to you, welcome. sir. Over to you, Thank sir. you. And if Yes, you ma'am. want to allow me to call the participants, it will be okay, or otherwise you are handling very nicely, sir. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will call the participant. okay, sir. Okay, sir. Thank you, Please. Dr. Vinita ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are going to start the presentation. And first of all, I would like to tell you that there are 15 presenter, ठीक है? और I think इस participant को आप सभी लोगों को maximum 5 मिनट मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग टाइम फ्रेम का ध्यान रखिए, पीपीटी वगैरह और समस्या आ रही है उसको आप ठीक करिए। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट के लिए हम नाम बुलाएंगे। इसमें नाम आपके अगर गलत होंगे तो आप डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर लेंगे कि नाम में जो भी प्रॉब्लम है, डेजिग्नेशन में जो भी हमको मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग नाम बुला रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल द नवीन चंद्र शर्मा, रिसर्च स्कॉलर, पटना यूनिवर्सिटी। आर यू प्रेजेंट हियर नवीन? निभा कुमारी, अंबिका, श्वेता, सनी आप प्रेजेंट थे? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। बाकी लोग अभी हो सकता है 11:30 पे ज्वाइन करें, आप स्टार्ट करिए। ओके सर। यू आर रिसर्च स्कॉलर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ठीक? यस सर। लास्ट I am sharing my screen, sir. हाँ, लेकिन ये पीपीटी आपकी लास्ट में ओपन है, फर्स्ट स्लाइड करिए। ओके सर, ओके। इनिशियल से करिए स्टार्ट। हाँ, ओके सर। Okay, good morning, sir and madam. I am Sunny Kumar, research scholar, Patliputra University, Department of Psychology. My topic is mental health among adolescents in context of self-confidence and locus of control. And my aims and objective of the topic is the present empirical study was intended to make a comparison between adolescents belonging to internal and external locus of control groups, and second is high and low self-confidence group on the measure of mental health. For the purpose, my hypothesis is it was hypothesized that adolescents respondents belonging to internal and external locus of control groups, and second is high and low self control groups will differ significantly from one another on the measure of mental health. For the purpose, I took 100 adolescents who were selected, and finally equally belonging to each of the 4 independent group, that means ILC internal locus of control 50 and ELC external locus of control 50, high self-confidence group 50 and low self-confidence group 50. Thereafter, respondents were administered and compared in terms of their Sunny, your mental voice health. is cracking. Yes, ma'am. Your voice is cracking. Due to network error, ma'am. Yes. Thereafter, am I audible, ma'am? Yes. Yes. Okay. Thereafter, respondents were administered and compared in terms of their mental health based on MMHSI, Mithila Mental Health score using T value, and it was found that respondent of external locus of control group and high self-confidence group manifested sound mental health as compared to respondents belonging to their counterparts. Therefore,
hypotheses were confirmed, and findings were interpreted on the ground of the characteristics of locus of control as well as self-confidence. It is our common observation that person of external locus of control are spoken and blame outside objects, stimulus, and person for their own success or failure, and leading to be free from stress and anxiety and possess sound mental health. And contrary to it, person of internal locus of control group do not rely on others and blame oneself for his or her own success or failure, and leading to manifest sound mental health. And high self-confidence group are fully energized and therefore possess sound mental health. And contrary to it, respondent of low self-confidence group are more prone to the stress and anxiety. Thus, mental health is a function of locus of control and self-confidence. Thank you, ma'am and sir. थैंक यू सनी। आपने रिजल्ट्स नहीं मेंशन किया टीएल टेबल। रिजल्ट आया सर हमारा, इसमें रिजल्ट है कि जो हमारा ये रिजल्ट ही था सर, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रुप। आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिजल्ट टेबल। ओके थैंक यू। बिकॉज ऑफ सर जल्दी में पीपीटी बनाने के कारण, अभी आपने जब सभी को पीपीटी के लिए बोला तो एट अ टाइम पीपीटी बनाया और जितना हो सका मैं किया हूँ सर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। नवीन चंद्र शर्मा, वन बाय वन नाम बुला रहे हैं, आप लोग जो प्रेजेंट हो आप लोग अनम्यूट करके आप रिस्पॉन्स करिए। निभा कुमारी, अंबिका, Yes, sir. Present, sir. are you present? You are a Yes, research sir. scholar in Magadh University. Please Yes, start sir. your presentation. Yes, sir. Sir, I will present my screen. See. Okay. okay Visible, sir? Yes, it is visible. Good morning, ma'am, sir, and all research scholars. I'm Ambika, research scholar, Department of Psychology, Magadh University, Bodhgaya. My topic is creativity among underachiever school students in context of integrated yogic practices. The present study was carried out on 60 underachiever school students. School students identified on the basis of high IQ but poor academic achievement. They all were selected from Patna using purposive sampling. School students were equally divided into two groups, experimental groups and control groups. The number of students in each group was 30. The purpose was to examine the influence of integrated yogic practices, asana, pranayam, meditation, relaxation, on creative potential among respondents. It was hypothesized that integrated yogic practices would have significant influence on verbal and non-verbal creative potential. The respondents of the experimental and control groups were administered Bakar-Mehndi creative test along with PDS to measure verbal and non-verbal creative potential for both the groups. Thereafter, integrated yogic practices training were started with underachiever students. Experimental group, asana, giving 30 minutes, pranayam, 10 minutes, meditation for 10 minutes, and relaxation for 5 minutes. Duration was 3 months, 4 days a week. On the other hand, the respondent of the control groups were not subjected to integrated yogic practices training. After the completion of the training, duration, respondents of both the groups were again examined on the measures of verbal and non-verbal creative potential. The obtained score in pre and post conditions were treated using T ratio for both experimental as well as control group of respondents. The T value between the difference in mean in pre and post conditions for the experimental group was found significant. On the other hand, the T value for difference in mean for control group of respondent student was found insignificant. Significance value of T for the experimental group respondent is due to the influence of integrated yogic practices. Respondent of experimental groups excelled in verbal as well as non-verbal creative potential due to integrated
yogic practices training. The finding might be interpreted on the ground of strengthening the positive traits and eliminating the negative thrills as a result of integrated yogic practices. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shweta Saurabh, are you present here? संयुक्ता, मैम आप हैं? आप प्रेजेंट है? आर यू प्रेजेंट हियर? You are assistant professor in Department of College of Arts and Commerce, Patliputra University. रंजीत कुमार, रेखा कुमारी, कुमारी गुड़िया, ये लिखा हुआ इस तरह से, कुमारी गुड़िया, रंजीत कुमार, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल। आप सभी की आवाज नहीं आ रही, अगर आप लोग प्रेजेंट हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आप रिस्पॉन्स करें, तभी हम आपको सुन पाएंगे। डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, संतोष कुमार, डॉक्टर अंबुज कुमार, शशिकला, आप सभी लोग जिनका प्रेजेंटेशन 11:30 से 12:45 के बीच में। हेलो शशिकला सर, आप यस सर, मैं शशिकला, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं शशिकला, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। सर गुड मॉर्निंग मैम। आपके पास और पीपीटी नहीं है क्या? पीपीटी नो सर, सर मेरे घर में मेरे चाचा ससुर की डेथ कर गई, सो मुझे टाइम नहीं मिल पाया पीपीटी तैयार करने के लिए, और मैं अपना लैपटॉप हॉस्टल में ही छोड़ दी जल्दी में गांव आने के चक्कर में, तो सॉरी सर इसके लिए। प्रेजेंटेशन स्टार्ट। जी सर। सर मेरा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के संदर्भ में। सर, हेलो हाँ बोलिए। सर कोविड-19 मानव इतिहास का एक ऐसा काला दौर रहा जिसे याद करते ही लोगों की रीढ़ में सिहरन सी उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे लोग भी मुझे अपने सर्वे में मिले जिनके घर में इसके पहले जो महामारी आई थी हैजा की, जिसमें गांव में लोगों के घरों में कई लोग पूरे घर के घर साफ हो गए, ऐसे लोग भी मिले जो उनके साथ उस महामारी में भी हुआ और इस कोरोना में भी हुआ। तो ऐसे लोग तो बात करते समय बहुत ही चिंता तनाव से ग्रसित दिखे। मेरा उद्देश्य है, मेरे टॉपिक का उद्देश्य है लॉन्ग कोविड के लक्षणों का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना और उससे निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों का सुझाव देना। मेरी मेथोडोलॉजी है वर्णनात्मक शोध पद्धति का पालन करते हुए जिसे पूरा किया गया है, और शोध कार्य को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लिया गया है। सैंपल साइज के तौर पे 200 लोगों से आंकड़े संग्रह किए गए हैं। निष्कर्ष इसमें निकला है कि कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया है कि वे लॉन्ग कोविड के लक्षणों से अभी भी प्रभावित हैं और उन्हें ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे, और या ये भी हो सकता है कि उनके मन से कोरोना का डर कभी समाप्त भी न हो। उन लोगों ने स्वीकार किया कि जैसे ही किसी महामारी के बारे में पता चलता है तो वे सहम से जाते हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लगे और फिर कोरोना ना आ जाए और हम घरों में बंद ना हो जाएं। बहुत से परिवार ऐसे मिले जो निम्न वर्ग के थे। उस समय सरकार की बहुत सी योजनाओं के बावजूद भी वे कई दिन तक भोजन के लिए तरस गए। जब कार्यकर्ता लोग उनके घर तक पहुंचे, उन्हें राशन प्रोवाइड करवाए, तो उन्हें खाने के लिए कुछ अनाज मिला। आप मेथड और रिजल्ट पे आ जाइए। यस शशिकला मैम। जी, मेथड और रिजल्ट पे। हाँ, जी, मेथड एंड रिजल्ट।
ओके सर, मैथ ये मैम इसमें मुझे रिजल्ट में मिला है कि लोग अभी भी शंका, भ्रम और अवसाद तथा थकान, अकेलेपन से डर, विस्मृति यानी ब्रेन फॉग, एकाग्रता में कमी जैसे लक्षणों से अभी भी जूझ रहे हैं लोग। और कुछ लोग चिंता, तनाव और बहुत 2% लोग ऐसे भी मिले हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। अन्य विकारों में शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ग्रसित लोगों ने भी स्वीकार किया है कि वो लॉन्ग कोविड-19 के लक्षणों से जूझ रहे हैं और इसके लिए वो हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा रहे हैं और अपनी जीवन शैली को भी सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। एक बार हम नाम दोबारा बोल रहे हैं, आप लोगों में से जो प्रेजेंट हो आप रिस्पांस करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करिए तभी आवाज आएगी। नवीन चंद्र शर्मा, आर यू प्रेजेंट? निभा कुमारी, श्वेता सौरभ, संयुक्ता, रंजीत कुमार, स्कॉलर, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मैं निभा कुमारी बोल रही हूँ। 1 मिनट। हेलो निभा कुमारी, यू आर रिसर्च स्कॉलर इन मगध यूनिवर्सिटी। प्लीज हेलो स्टार्ट सर, योर मैं निभा कुमारी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो सर, आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है। आ रही है, प्रेजेंट करिए। सर मेरा टाइटल है कंपैरिजन ऑफ coping with stress and locus of control between differently able and normal student. Abstract present empirical investigation was carried पीपीटी नहीं out. बनाया निभा जी? क्या सर? आपने पीपीटी बनाई है? पीपीटी नहीं बनाया है आपने? नहीं सर, नहीं बनाई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़िए। Present empirical investigation was carried out with the objective to make a comparison between differently able and normal adolescents in terms of their stress coping strategy and locus of control. It was hypothesized that normal and differently able adolescents will differ significantly in terms of first stress coping strategy and second locus of control for purpose 128 adolescents equally belonging to differently able group number of 64 and normal group number of 64 selected from urban Patna using purposing sampling technique. Differently able respondents were physically handicapped and were selected from different sources, including rehabilitation home, physical personal contact, private and government hospitals and clinics. Normal group of respondents were either their family members matching with the respondents of their nears and dears. The respondents of both groups were administered stress coping techniques scaled by Vijay Lakshmi and Shruti Narayan and locus of control scaled by RN Singh to measure the different variables. Basis this, a socio-demographic data sheet was used to seek their personal and background information. The obtained data was analyzed using chi-square. The result supported the hypothesis. It was found that first, different able respondents excelled in external locus of control and compared to their normal counterparts. However, differently able groups can excel over normal counterparts respondents on the measure of coping with a stress technique. The finding were
interpreted on the group of physical limitation on the parts of group of respondents having physical abilities differently able respondents and found blaming outside factor for their limitation and for their success of or failure, but at the same time, they always intended their 100% to cope with environment as well as their personal stress. Thank you so much, sir. थैंक यू निभा जी। लेकिन ये जब आप लोग याद रखिए कि प्रेजेंटेशन का जो बेस्ट तरीका होता है कि आप पीपीटी बनाइए, अच्छे से बनाइए, प्रेजेंट करिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो फॉलो किया, ठीक है। ये चीज आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी और आगे आप लोग भी बेहतर होने वाले हैं फ्यूचर में। चीजें जितना बेहतर हो उतना करना चाहिए, ठीक है। तो बिना अगर आप ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। तो बाकायदे पीपीटी वगैरह जरूर बनाइए, कहीं प्रेजेंटेशन हो पीपीटी जरूर बनाइए। श्वेता सौरभ, ओके सर, थैंक यू। क्लोज कर। संयुक्ता, रंजीत, जो जवाब देंगे। हाँ, हेलो हेलो, आई एम संयुक्ता। हाँ हाँ, यस सर। Ma'am, you are a professor in College of Arts and Commerce, Patliputra University. Please present your paper. Good morning to all of you. मैम, आपका इंटरनेट लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस जो है उतनी क्लियर नहीं है, बहुत अजीबोगरीब research scholar cum Your voice is not clear, Sanjita ji. Department of Psychology, College of Commerce, Arts and Science, Patliputra University. Sanjita ji, your voice is not clear. आप एक बार अपने आप को ठीक है दोबारा से आप ज्वाइन करिए। Are you audible? इंटरनेट ऑफ करके ऑन करिए, जिससे कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, तब आप ज्वाइन करिए, जिससे आपकी वॉइस ठीक है। मैम अभी आप फिर से ज्वाइन करिए दोबारा जो है करके, तो फिर आपको स्टार्ट कर। रंजीत कुमार, रेखा कुमारी, कुमारी गुड़िया, रंजीत कुमार, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, संतोष कुमार, रंबूज कुमार, संतोष कुमार से। संतोष कुमार, हाँ जी सर। जी सर। You are a research scholar in Vinova Bhavya, Haribagh? Yes sir. Yes sir. Good afternoon sir. Good afternoon. अभी गुड मॉर्निंग ही है। Please start your presentation, Santosh. Yes sir. Good morning sir. My research topic is a study of alcoholics and mental health. Alcoholism. Alcohol is the most common substance which is used in all over the world. Any person who takes alcohol is a drinker, while a compulsive drinker. Yes sir. अरे अगर आप अपनी ठीक है जिससे आप बोल रहे हैं, अगर आप स्क्रीन आप शेयर करते तो ज्यादा भी आप दूसरे मोबाइल पे दिखा रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में हो तो आप उससे करें तो ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी। ओके सर। अब कर पाए तो Alcohol is called an alcoholic. Alcoholism is defined as alcohol seeking and consumption behavior that is harmful, long-term and uncontrollable. Harmful consumption can use unpredictable behavior. Next, personality.
पीपीटी नहीं है, डिस्प्ले करें। पीपीटी शेयर According कीजिए to संतोष जी। अगर आपने बनाया है तो आप शेयर करिए। बनाए हैं सर। अरे आप लोगों को जैसे मोबाइल में भी तरीके होते हैं, या मोबाइल से भी आप शेयर कर सकते हैं, अच्छी तरह ओके से सर, शेयर। देख आप एक रहा हूँ सर। मोबाइल में आप दिखा रहे हैं, ये कोई तरीका है प्रेजेंटेशन? सॉरी सर। स्कॉलर हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग इतने बड़े और पढ़ते हैं आप यूनिवर्सिटी में, इस बातों को आप ध्यान रखिए ना। फिर मान लीजिए चीजें ठीक है, एक बार होती हैं गलतियां, ठीक है, लेकिन आपको फ्यूचर में भी इस बात को ध्यान में आप रखिए, गलतियां ना हो। आने वाले समय में आप इस तरह से अगर आप बच्चों को बताएंगे तो क्या सोचेंगे? ठीक है, शेयर कीजिए आप। मेथड चाहिए, मेथड एंड रिजल्ट। चलिए बोलिए, ठीक से आप वैसे बोलिए, और शेयर की जरूरत नहीं है, वैसे जी सर। My objective is to study the impact of personality factors, introversion and extroversion, neuroticism and life proneness on alcoholic and non-alcoholic behaviors. आप मोबाइल To में study the दिखाइए impact. संतोष जी, अपना वीडियो दिखाइए और बोलिए। पसंद पसंद जी, अभी स्क्रीन मत शेयर करिए। जी गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग आपको सर। कहाँ कहा गया? पसंद जी, आपको अभी नहीं कहा गया, आपने शेयर किया। जिनका नाम बुलाया है वो शेयर करिए ना, आपने क्यों शेयर? संतोष कुमार इज अभी प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आपने बिना नाम लिए स्क्रीन शेयर कर दिया। इनका जब नाम आपका भी नाम बुलाया जाए तब करिए। इनका नाम भी तो नहीं है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया सर। बसंत कुमार का पसंद नहीं है। आप बोलिए, आप ऐसे बोलिए। संतोष कुमार जी मैम, मैं बोल रहा हूँ मैम। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू जी। मैम, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव मैम, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बिहेवियर्स. माय हाइपोथेसिस इज the introvert and extrovert respondents would significantly differ in their alcoholic behaviors. Hypothesis number 2, alcoholics would score high on neurotic scales than non-alcoholic. My hypothesis is 3, there is significant difference in alcoholics and non-alcoholics terms of life proneness behavior. Hypothesis number 4, alcoholics would score high level of psychoticism than non-alcoholic. And hypothesis 5, non-alcoholics would show high level of mental health and alcoholics. I have used the tools, the EPQ of Ising, which is developed by Day and Thakur in 2011, was administered to assess the personality, which cover the three components of personality: extroversion, introversion, neuroticism, life proneness, and psychoticism. And second tools is the mental health battery, which is developed by Sen and Gupta in 2023, was used to assess the mental health of respondents. A personal data sheet was prepared and used for collecting necessary information regarding alcoholics and non-alcoholics behavior. And my data shows comparison between alcoholics and non-alcoholics groups in terms of their introvert, extrovert personality traits. I have taken What is your finding? बस finding explain कर दीजिए। Okay, ma'am. My conclusion is, it is possible to conclude that personality trait and mental health play important role in the development of addictive behavior and such as alcohol dependence and associated disorders. That is why there are important factors to be considered during interventions that aim to diminish and treat this clinical condition and its impact and or severity.
better mental health may also reduce the alcohol consumptions. Thank you, ma'am. And thank you, sir. ठीक है प्रेजेंटेशन आप करते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए इस तरह से, जैसे हम लोगों ने भी ऋषिकेश से हम लोग पढ़े हैं और तमाम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में फॉरेन में भी हमने दिया है। तो अब प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, कैसे पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, लैपटॉप से कैसे करते हैं, मोबाइल से कैसे करते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और उसकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करें तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। जी सर, जी सर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम सर। आपके नाम के साथ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी जुड़ा होता है। जी सर, जी सर। प्रोफेसर का नाम जुड़ा होता है, तो प्रेजेंटेशन के प्रति आप सीरियस रहिए, अच्छे से पीपीटी बनाइए, प्रेजेंट करिए, तो एक प्रोफेशनल वे तरीका आप सीखिए। जी सर, जी सर। बसंत कुमार जी ने स्क्रीन जी आप इस सेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं? जी आप इस सेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं? आप कहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं? जी सर, आप कहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं? टॉपिक क्या है आपका? नवादा से 33। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है मूल परक शिक्षा में गिरावट, भारतीय संदर्भ में। पहले आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम उसमें मेरा नाम बसंत कुमार। बसंत कुमार। और जी जी गुड मॉर्निंग सर। आपका गुड मॉर्निंग मैम जी। आपका डेजिग्नेशन जी मूल परक शिक्षा में फिलोसफी है सर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मूल परक शिक्षा में गिरावट, भारतीय संदर्भ में एक विवेचन। हेलो। हाँ बोलिए, स्टार्ट करिए। जी सर, मगध यूनिवर्सिटी से जी। पीएचडी कर रहे हैं, यू आर रिसर्च स्कॉलर? जी हाँ, इसको जी कर रहे हैं सर। मूल परक शिक्षा की अवधारणा उपेक्षाकृत आधुनिक तथा व्यापक है। प्रायः मूल परक शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल समाहित है। इसमें विभिन्न विषयों को मूल परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तिगत में समाहित करने पर बल दिया जाता है, जिससे उसका संतुलन तथा सर्वोत्तम से विकास हो सके। शिक्षा में गिरते मूलगत स्तर में दुष्कर्म परिणाम आज समाज में ओर देखे जा रहे हैं। देश भर में फैले भ्रष्टाचार, लूटमार, अगजनी, राहजनी, बलात्कार एवं अन्य अपराध गिरते मूल स्तर के ही परिणाम है। वर्तमान में जीवन मूल्यों की बात करने वाले उपहास का पात्र बनते हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी शिक्षित होते हुए भी जिस अनैतिक मार्ग पर बढ़ रही है, उसे देखते हुए भावी पीढ़ियों के स्वरूप की कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। शिक्षा को व्यापक बनाकर जिस कदर उसका बाजारीकरण किया जा रहा है, निजी कोचिंग सेंटर हर गली में, हर मोहल्ले में, सोसाइटी में सभी को झूठे प्रलोभन देकर अपने जाल में फांस रहे हैं और खुल्लम खुल्ला शिक्षा के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं। मजबूर और असहाय अभिभावक विकल्प खोजते खोजते उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं, जिसका निजी संस्थान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। कई तो ऐसे पूंजीपति लोग देखने में नजर आए हैं जिनका शिक्षा से कोसों तक कोई नाता नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने धन और यश के बल पर इन विद्या मंदिरों को सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना डाला है। आज यह शिक्षा का व्यापीकरण नहीं तो क्या है,
कई बार तो जहन में यह भी सवाल उठता है कि आखिर इसका उत्तरदायी कौन है, हम हैं, सरकार है, या हमारी शिक्षण पद्धति है। बसंत कुमार जी, आप जी न्यू सर। एजुकेशन पॉलिसी के विषय में जानते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये तो नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है, आ गई है, कई जी जगह जी इम्प्लीमेंट आपके यहाँ भी हो रहा है, ठीक जी है? सर। जी सर। उसके विषय में क्या जानते हैं? उसका हायर एजुकेशन में क्या रोल है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जी। क्या चेंज आने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको इन्फ्लुएंस करेगी? हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? हायर एजुकेशन के लिए सर, ये नैतिक अनैतिक का जो लोग पालन कर रहे हैं, नैतिक अगर मूल्य का अगर जानकारी हो और उसको अमल करे तो शिक्षा आगे बढ़ सके। नैतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी। नई शिक्षा नीति के बारे में पता है? नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बारे में आपको जानकारी है? ठीक है सर, क्लोज करिए। जी सर। और कोई प्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल है? जी सर। नवीन चंद्र शर्मा, आप क्लोज करिए। श्वेता सर, रंजीत कुमार, बसंत जी अपनी स्क्रीन बंद कीजिए और अपने को म्यूट कीजिए। रेखा कुमार, स्क्रीन बंद करने की। आप लीव हो जाइए। रंजीत कुमार, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, डॉक्टर अंबुज कुमार। आप लोगों में से कोई भी प्रेजेंट करना चाहता है तो अपना नाम अपने अनम्यूट करे और नाम बताए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। श्वेता, श्वेता सौरभ, व्हाट्स योर नेम? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आप दोबारा से आप ज्वाइन करिए। संयुक्ता, संयुक्ता मैम, आर यू हियर? संयुक्ता मैम, आपने ज्वाइन किया था लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो अगर आप अवेलेबल है तो आप जो है आप, ठीक है, आप प्रेजेंट करिए अपना पेपर। श्वेता सुंदर, आवाज अभी भी आपकी क्लियर नहीं है श्वेता जी। इनका पूरा नाम श्वेता सौरभ? श्वेता सौरभ, आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तो श्वेता सौरभ। आपका नाम क्या है? श्वेता सौरभ है? श्वेता सौरभ। पहले अपना नाम तो बताइए, लिस्ट में जी आपका जी, नाम। श्वेता सौरभ। श्वेता सौरभ। श्वेता सौरभ, ठीक है, प्रेजेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा टॉपिक है वीडियो ऑन जॉब कीजिए। ओके। पीपीटी है आपके पास? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं है सर मैम। ठीक है, वीडियो ऑन कीजिए। अपना डेजिग्नेशन बताइए। रिसर्च स्कॉलर। कहाँ की, किस यूनिवर्सिटी? मगध यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, टॉपिक बताइए। सर मेरा टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन बिटवीन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट। हाँ है अवेलेबल। कंटिन्यू करिए, आराम आराम से बोलिए, आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वॉइस ठीक नहीं, तो आराम आराम से धीरे धीरे बोलिए। ये सब चीजें आपको पहले करना चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। पेपर प्रिंट करने के लिए आपको पूरा इंटरनेट लेना चाहिए। उसकी आवाज नहीं आ रही, कोई तैयारी है कोई? On female teachers equally belonging to government school and private school. उस नेटवर्क इशू
नेटवर्क इशू इसलिए होता है कि इधर जब आप भी नहीं आवाज आ रही है अच्छे से। जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसको पहले 2 दिन पहले जो पढ़े सर? इसका डेटा जो है इसका रहना लगना चाहिए, तभी मोबाइल ठीक चलता है। आपको पहले से डेटा का पैक ज्यादा लेना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट की प्रॉब्लम इसीलिए आती है ना। आप स्टार्ट करिए। पढ़े सर आगे? हाँ हाँ। It was hypothesis that first, teachers of public and private schools; second, teachers belonging to high and low job involvement groups will differ significantly in terms of their job satisfaction. For the purpose, teachers respondent were admitted job satisfaction scale by Singh and Sharma, job involvement scale by Santosh Dhar, Upinder Dhar and D.K. Srivastava. To measure job satisfaction and job involvement respectively, besides this, a PDS was used to seek the personal and background information about school teachers. The teachers were grouped into high and low job in teachers of government and private schools, as well as high and low job involvement groups were compared in terms of their job satisfaction. It was found that teachers of government schools and teachers belonging to high job involvement groups manifested higher degree of job satisfaction. Thus, hypothesis was retained. The findings were interpreted on the characteristics of job satisfaction, job involvement, and nature of schools. Thus, it was concluded that government schools and high levels of job involvement are conducive to job satisfaction. Thank you, sir. थैंक यू। आपने पीपीटी नहीं बनाया था श्वेता जी? नहीं सर। प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, आप लोग उसको अडॉप्ट करिए, ठीक है? क्योंकि जैसा आप काम करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में भी ग्लिम्स दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए आप संयुक्ता मैडम मैसेज किया था अभी कि उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है। रंजीत कुमार और कोई प्रेजेंट करेगा? अगर कोई और प्रेजेंटर अवेलेबल है तो अपना अनम्यूट करे, नाम बताएं। हमने कई बार नाम जो है रिपीट किया, रेखा कुमारी, कुमारी गुड़िया, रंजीत कुमार, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, डॉक्टर अंबुज कुमार, नवीन चंद्र शर्मा, रंजीत कुमार, संयुक्ता मैडम। इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन अभी नहीं दिया है, बाकी संयुक्ता सर प्रेजेंट, संयुक्ता इज प्रेजेंट। हाँ मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, कंटिन्यू। Myself Sayukta, research scholar from assistant professor, Department of Psychology, College of Arts and Science, Patna. My topic is comparison between traffic and non-traffic police persons in context of quality of life and life satisfaction. My present empirical investigation is a comparative study intended to make a comparison between traffic and non-traffic police persons in context of quality of life and life satisfaction. Hypothesis is there will be a significant difference of quality of life and life satisfaction between traffic and non-traffic police persons of Patna district. Urban. Sample is 50 traffic and 50 non-traffic police persons were selected from urban Patna based on purposive sampling. The selected group of sample were subjected to quality of life scale by WS quality of life as well as life satisfaction scale by Alan and Srivastava to measure the variables. Personal data sheet was used seek the personal and background information of the respondent that obtained data were treated using chi-square. The findings
The findings uphold the hypothesis retained. It was found that non-traffic police persons excel in both quality of life as well as life satisfaction over traffic police persons. Thus, hypothesis were written, the findings were interpreted on the ground of that traffic police persons are always and almost exposed to environmental pollution, leading to the victims of several physical and psychosomatic, cardiovascular, and behavioral disorders. On the other hand, non-traffic police persons are pollution, leading to likely to excel over traffic police persons on high life satisfaction. Quality of life and life satisfaction both are the function of environmental pollution among police persons belonging to traffic and non-traffic police persons. Always the non-traffic police person is better quality of life and life satisfaction as well as traffic police person. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am, for your presentation. और एक बार मैं दोबारा से नाम बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन अभी नहीं दिया है, अगर आप प्रेजेंट हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए और रिस्पांस करिए, बताइए। नवीन चंद्र शर्मा, रंजीत कुमार, रेखा कुमारी, कुमारी गुड़िया, रंजीत कुमार, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, डॉक्टर अंबुज कुमार। आप लोगों में से कोई प्रेजेंट है या और किसी को प्रेजेंट करना है तो आप अनम्यूट करके रिस्पांस करिए, अदरवाइज प्रगति जी, यू हैव टू प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट करना है। 11:30 से 12:45, 12:45, 11:30 से 12:45 के बीच में जिनको प्रेजेंट करना है, ये उस टाइमिंग अभी चल रहा है सेशन जो है, इस सेशन में जो लोगों को प्रेजेंट करना है आप रिस्पॉन्स करिए, बताइए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। और आप अनम्यूट करेंगे आप तभी बोल पाएंगे, अगर आप अनम्यूट करेंगे आप तभी बोल पाएंगे, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर विनीता मैम। यस सर। मैम आई थिंक लगता है इस सेशन में भी 8 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है। हाँ यस, 8 presenters। हाँ यस मैम। सर एक बसंत कुमार जो है, हाँ I am unable to find his name in the list of participants। मैम उनका नाम जो है लिस्ट में नहीं है, उन्होंने एडिशनल मेंशन कर नहीं, दिया है। लिस्ट में नहीं, उन्होंने अलग से मेंशन कराया है और उन्होंने दिया है इसको। आई थिंक ही इज फ्रॉम फिलोसफी। ओके, टॉपिक और उनकी डिटेल्स वगैरह मेंशन करके हम भेज देंगे, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनका, जो मैंने बताया है, डेजिग्नेशन, टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन, ये इंफॉर्मेशन। तो सर तो ये सेशन समाप्ति की ओर है। जी मैम, अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपको फॉरवर्ड कर दें इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस, आपका कांटेक्ट नंबर जो है हम लोगों को शेयर कर ईमेल दीजिएगा। आईडी, सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप नंबर आप शेयर कर दीजिए तो। डॉक्टर विनीता मैम। Okay sir, I am sharing you in the chat box to you only। Okay sir। ओके मैम। Yes sir, I have sent you, please find the number। Yes ma'am, got it।
So shall we conclude, sir, this session? Yes, ma'am. Yes. Okay. So thank you so much, sir. With this, the 3 online technical sessions have completed now, and without much technical problems, all the sessions have been completed successfully. Only the big problem, that the issue that came today's sessions, that we felt that the unavailability of the PPT by the participants. It was a great lacking of today's session that the participants have not prepared their PPT, and that is an important part of any presentation. They should be always, whenever they are going to present a paper, they should always be prepared with their PPT. What the work they have done, that should be visible to all the participants also. So that is the important thing, that you must prepare your PPT when you are going to present your work. So this was the lacking throughout this sessions, and the sessions were very informative and fruitful. I am sure that each and every person who has attended the sessions have somewhere gained and enlightened with the sea of knowledge and information. With these words, I, Vinita Kumari, Dr. Vinita Kumari, Assistant Professor of PG Department of Commerce, Magadh University, Bodhgaya, would like to give my heartfelt thanks to the chair of the session, Dr. Shamini Srivastava ma'am, and co-chair of the session, Dr. Amish sir. It was really, sir, ma'am and sir, very fruitful and very informative, very enlightening session, and your suggestions were very great. And I would like to give hearty thanks to the participants of the session who kept patience and nicely presented their paper and learned many things from our experts and other papers presented by the other participants. Thank you so much for your cooperation. And special thanks to Shamini ma'am and Amish sir for your nicely cooperation and coordination. Thank you so much, ma'am. And I hope to see you both in offline sessions, seminars, conferences also. That will be more fruitful and full of experience. We will get more experiences and many more benefits. Thank you, Dr. Vinita ma'am. You have also performed your role wonderfully as a moderator of the particular different session. Thank you very much for inviting Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. So now we can leave the session, sir? Yes, ma'am. Okay, proceed. Okay. Okay.